मल्टीनेशनल्स हों या लोकल ब्रांड्स हों, उनके हम मेजर सप्लायर्स हैं द लास्ट 12 ईयर्स। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि टेक्सटाइल से भी और लेदर इंडस्ट्री से हमारा बहुत पुराना ऑलमोस्ट 27 ईयर्स हो गए उनको हम मैन्युफैक्चर करके। और ये प्रोडक्ट भी जो है वो एक तरह की, हमारी सारी प्रोडक्ट्स बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। हमारी कंपनी का जो मिशन है कि हमने पाकिस्तान को जो है ना सेल्फ रिलायंट करना है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। क्या बात है। और यही इसमें कि हम ना सिर्फ जॉब क्रिएशन होती है बल्कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होती है, ताकि एटलीस्ट हम थोड़ा सा बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट को बेहतर कर सकें। जो इस वक्त पाकिस्तान का मसला है कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, चीज़ें महंगाई बढ़ रही, क्योंकि हमारी तमाम सनतें और हमारी इंडस्ट्री इंपोर्ट की तरफ डिपेंडेंट है, जबकि हमारा टारगेट है कि हमने इसको लोकल प्रोड्यूस की तरफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे लाना है, ताकि लोकल लोगों को मौका मिले और हमारे मुल्क की प्रोडक्ट जो है वो जब जितनी प्रोड्यूस होगी तो जीडीपी हमारा बेहतर होगा, बल्कि एक्सपोर्ट अब हम कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत बात आपने की, इतनी खुशी हो रही है कि किस तरीके से आपको पता है, आप एक अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को मजबूत करने की आप सोच रखते हैं। रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को कामयाब करे, बिकॉज हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो तवाज़ुन है वो बेहतर नहीं है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अच्छा है आप लोग केमिकल पे काम कर रहे हैं, जो दागदार करेगा पाकिस्तान को आप लोग केमिकल के जरिए उसको साफ बिल्कुल करेंगे जी। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करूं कि हमने पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी इसमें एफर्ट्स किए हैं और इस वक्त हम यूरोप के अंदर, अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर पहुंच गए। हम तकरीबन 1,500-2 हज़ार टन पर मंथ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से केमिकल। और ये नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हमारी टेक्सटाइल्स और लेदर हैं, तो ये हमें खुशी है कि हम एक नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया और पाकिस्तान का जो नाम है और झंडा अब वहाँ इस फील्ड में भी लहरा रहा है, जहाँ सिर्फ यूरोप और चाइना की जारादारी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो अभी प्रोग्राम से पहले हम तो यही बातें कर रहे थे, हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। बड़ा वैक्यूम मौजूद है हमारे पास, लेकिन एक अच्छी सोच और एक पॉजिटिविटी के साथ अगर हम कोई भी काम करें तो मुझे लगता है कि परवरदिगार जो है गैब से आपकी बिल्कुल आई थिंक। सर आगे बढ़ते हैं, आप बताएं कि कौन सा टेन्योर था आपका जब आपने ग्रेजुएट ज्वाइन किया, कौन से प्रोग्राम में आपने अपने आप को एनरोल करवाया? जी बिल्कुल, इट वाज आई थिंक सो नवंबर 1992। आपको मंथ भी याद है? जी बिल्कुल याद है। SM4618 वाज माय बैच। क्या बात है, हमें याद है। गो के एक छोटा सा निकाह की तारीख याद है आपको? हाँ, वो भी कुछ याद है। वो कुछ याद है, यानी कि देखिए वफादारी और असल मोहब्बत आपको बिल्कुल है जी। यहाँ से तो बहुत अच्छा वक्त, कहते हैं ना कि आपकी असल यादें वही होती हैं जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दोस्त, और वो जो वक्त है वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसमें जरा फिक्र इंसान की, माशी फिक्र कम होती है, दूसरी फिक्र ज्यादा होती है, तो इंसान उसको एंजॉय करता है। तो 92 से 95 तक हम रहे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2.5 साल तकरीबन अर्सा गुजरा। क्योंकि हम ज़्यादातर वो थे जो बैचलर्स करके आए थे, बीकॉम किया था, मेरा बैकग्राउंड गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज का था, तो हमें एक तरीके से थैंक यू जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा वो प्रिलिमिनरी कोर्सेज भी करने पड़े, चूँकि दैट वाज अ रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी इस इदारे ने, ग्रीनिच से, इससे हमें बहुत अच्छा हमें ग्रूम किया। सर जरूरत नहीं है, यू आर द पर्सनैलिटी, आप इटसेल्फ आप बता रहे हैं कि आपके पीछे आपका एकेडमिया है, आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी जिसको कहते हैं नॉलेज है, स्किल्स हैं, और वो नज़र आ रहा है आपको बताने की। और इतना प्राउड होता है जब अलमनाए यहाँ पर आकर बैठते हैं, वो अपनी पूरी स्टोरीज बता रहे होते हैं। मैं समझता हूँ सक्सेस स्टोरी नहीं, सक्सेसफुली तो वो खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके पीछे माशाल्लाह जो चीज़ें सारी चली हैं। सर मुझे ये बताएं, ये तो चलें आपका सारा सीरियस पार्ट हो गया, मोमेंट बताइए ग्रीनिच का आपको जो याद हो, कोई आपने कोई शरारत, बचपने में सब करते हैं, कुछ किसी को तंग कर दिया हो, कोई ऐसी बात, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा हुआ जो आज भी आपको याद है और जैसे आपको भी हंसी आ रही है ना, इसका मतलब कुछ? जी बिल्कुल। ग्रीनिच के अंदर जो मैंने और मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि जिसकी हमें कुछ सज़ा भी मिली थी, क्योंकि हमने बाकायदा एक जो एनुअल फंक्शन था उसमें हमने एक स्किट बनाई थी। तो वो स्किट जो थी, जारी बात है उस वक्त के लिहाज से काफ़ी थोड़ी टफ थी, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऐसी ऐड की कि उसमें थोड़ी सी हमें पेनलाइज भी हुए, लेकिन वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और मेरा ख्याल में इवन मैडम भी और सईद साहब कोई नहीं भूलेगा जिसको वो रात याद होगी कि उस दिन क्या हुआ था यहाँ पे। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हमने वो फंक्शंस। और उसके अलावा ग्रीनिच मशहूर था कि देखें पढ़ाई भी होती थी खूब, और उसके बाद ये इनकी बहुत अच्छी आदत थी इदारे की कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपने स्टूडेंट्स को एंजॉय करवाते थे, यानी बेहतरीन किस्म के फंक्शन अरेंज करते थे।
बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते थे, तो हम नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। तो बहुत अच्छी यादें, बहुत मज़ा आया। और हमने ना सिर्फ वो जो स्किड हुई, उसके बाद मुझे इतना याद है कि मुझे राहत मुनीर साहब जो हमारे टीचर हैं, अभी भी मोहतरम है, उनके मुझे अभी भी रात को वो दांत नज़र आ रहे थे, यानी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हंस, इतना लोग हंस रहे थे उसके अंदर। तो बहुत मज़ा आया। क्या बात है सर। अब मुझे प्रोफेसर्स का बताएं मुबशर साहब, कौन से प्रोफेसर आपको था कि आप समझते हैं कि उसने मुझे पढ़ाया? सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी में एक मेजर चेंज लाते हैं। तो क्या थॉट है, क्या समझते हैं कि किस ऐसे प्रोफेसर से आपने बहुत कुछ सीखा? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल हमेशा से उनका मशकूर रहूँगा, एहसान दुरानी साहब मरहूम का, कि ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन। उन्होंने हमें बड़ा ग्राइंड किया, बहुत। मैंने उनसे 3 कोर्स किए हैं। बहुत से लोग होते थे वो एक ही कोर्स के बाद भाग जाते थे, बल्कि मुझे याद है कि जब उनकी पहली क्लास होती थी तो वो दरवाज़ा खोल देते थे और कहते थे कि जो अपने माँ बाप के लाडले हैं और जिनके दिल कमज़ोर हैं, ये दरवाज़ा खुला है, वो अभी जा सकते हैं। और स्ट्रेंथ होती थी क्लास में, और बहुत स्ट्रेंथ होती थी। लेकिन जो उन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें सोचना सिखाया। मार्केटिंग के हम स्टूडेंट थे, मेरा मेजर मार्केटिंग था। उन्होंने हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे की जाती है, बजट के अंदर इंडस्ट्री को कैसे खड़ा किया जाता है, प्रोडक्ट को, ब्रांड को बना के बेचना कैसे है, उसकी बजटिंग, उन्होंने हर तरह से हमें पूरी, जिसे कहते हैं ना, एक एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई कि जैसे एक आप अपने इदारे को एक मालिक की तरह लेके कैसे चलते हो। HR, एडमिन, उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। हर तरह से सही मानों में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उन्होंने पढ़ाई। उसके अलावा और भी बहुत अच्छे हमारे राहत मुनीर साहब फाइनेंस में वंडरफुल पर्सन थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अकाउंटिंग हमें पढ़ाई, बहुत अच्छी की। ऐसे एक समीर लाखानी थे, बेसिक मार्केटिंग हमने वहाँ से उनसे सीखी, जिसे कहते हैं कंज्यूमर, उन्होंने वहाँ से शुरू की। तो तमाम असातिज़ा बहुत अच्छे थे जिनके साथ हमारा यहाँ पे वक्त गुजरा। लेकिन दुरानी साहब की एक ऐसी शख्सियत है जो बोल नहीं सकते। क्या बात है सर। मुझे अब ये बताएं कि आपकी एक्टिविटी क्या होती थी, किस तरह की आप स्टूडेंट थे? कभी क्लास बंक की, या कभी शोर शराबा किया कैंपस में, कभी बस सोचा कि आज तूफान खड़ा कर देना है, आज मतलब करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा ख्याल में उस टाइम पे चूंकि देखें स्ट्रेंथ बड़ी कम होती थी, 92 की बात है, 92 में इतना ये चीज़ें नहीं थी। और साफ बात है, देखें हम नॉर्मली जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट थे वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, और हमें इस बात का एहसास था कि हमारे पेरेंट्स ने हम पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें कुछ करना है जाके। मेजॉरिटी ऐसे ही थे। बस हम जब शरारतें ज़रूर होती थी छोटी मोटी, थोड़ा बहुत कुछ टीचर्स से, ख़ासतौर पे उन टीचर्स को हमने तंग भी किया जिनसे हमें समझ नहीं आता था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसी भी क्लासेस थी जो नहीं तो हम उनको तंग करते थे वहाँ पे थोड़ा हद तक, लेकिन एक अदब के दायरे में। उस वक्त ऐसा नहीं था, और हमारे टाइम में टीचर का एक बहुत एहतराम था। कम से कम बाहर जाए कुछ भी कर लें, लेकिन उनके फेस के ऊपर जो है ना, कोई बंदा कोई ऐसी बात नहीं करता। कहना पड़ता है मुबश्शिर साहब, अभी भी बच्चे बहुत अच्छे, लेकिन अब बच्चों में ना ये वाला रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट नहीं है। और आई थॉट एंड आई बिलीव ये पेरेंट्स उनके ब्रॉटअप पे डिपेंड करता है, माहौल, ब्रॉटअप। अब लेकिन ऐसा हरगिज भी नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स वाकई बहुत अच्छे हैं। इट्स ऑल अबाउट, मैं समझता हूँ घर से परवरिश होती है स्टूडेंट की, बच्चे की, तो वो कैंपस में आके अपना दिखाता है। सर एक चीज़ मुझे बताएं कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था, मतलब किस तरह के दोस्त थे, कोई ख़ास दोस्त आपके, किस तरह का आप अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे? देखें हमारे दोस्त जो थे ना सिर्फ अपने बैच के थे जो SM4 के थे, बल्कि 5, 6, 3 एक पूरा, चूँकि उस वक्त बहुत सी क्लासेस आपको पता है कंबाइंड होती थी, तो हमारा वो बैच था। लेकिन जो मैं समझता हूँ मेरे जो करीबी दोस्त यहाँ रहे, वो फैसल एक हैं, फैसल टोपरा, ही इज़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक, और शहजाद काजमी, ही इज आल्सो इन बैंक। उनके भाई भी टोपरा साहब के भाई ने भी पढ़ा। कामरान बाद में आए थे, चूंकि वो बैचलर US से करके आया था। मैं, फैसल, फरहान, कमर, रजाउद्दीन, हम सब वो लोग थे जो हमने साथ, एक OS भी थे, एक आसिफ होते थे, तो हमारे जो भी 7-8 थे। फिर मेरे एक और भी दोस्त थे जो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से मेरे साथ चले थे, वो मुझसे एक बैच और 2 बैच जूनियर थे। मुझसे एक फौत हो गए, मोइन, वो तो बिल्कुल ही वॉज लाइक माई ब्रदर, हमने साथ ही किया। तो ये हमारे दोस्त थे, और हमने यहाँ बहुत अच्छा पढ़ा। ग्रुप स्टडीज़ होती थी, 3-3, 4-4 का ग्रुप होता था। तो नॉर्मली मेरा, फैसल का और नदीम का और शहजाद, 3-4 हमारा, अक्सर बहुत से कोर्सेज में, इवन मोइन, वी वर
एक साथ फिर ऑब्वियसली जो फाइनेंस में थे फिर वो थोड़ा से डिफरेंट उसमें रोल में चले गए, हम मार्केटिंग वाले थे, तो बहुत मज़ा आया। चलें, अब मुझे ये बताएं कि इफ़ यू विल बी द पार्ट ऑफ ग्रीनविच यूनिवर्सिटी अगेन, क्या सोचा है कि किस तरीके से आप कुछ कोलैबोरेशन के साथ आगे काम कर सकते हैं, या मज़ीद ग्रीनविच की सपोर्ट के लिए, या ग्रीनविच, या एज ए स्टूडेंट आप सोचते थे कि जब मैं किसी काबिल हो गया तो मैं ग्रीनविच के साथ इस तरह से काम आगे करवा सकता हूँ, या आप अभी भी दिमाग में आपके आप कैंपस में आए, आप समझते हैं कि कोई सजेशन आप देना चाहें? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि जैसे हम जैसे लोग हैं, जो मेरी स्किल है, मेरी स्किल B2B है, मैंने शुरू से जो है ना B2B सेल्स की हैं, तो मैं इस चीज़ में आज के स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर सकता हूँ अच्छी तरह, चाहे वो मुझे कोई एक सेमेस्टर में 1 दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं उनको जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, देखिए किताब एक अलग चीज़ है और दुनिया एक अलग चीज़ है। हम भी किताब से कुछ पढ़कर गए, लेकिन जब दुनिया के सामने बैठे तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी और बहुत डिफरेंट थी। और नॉर्मली B2B बिजनेस जो है वो उस ज़माने में भी इतना पढ़ाया नहीं जाता था। ज़्यादातर MBA मार्केटिंग जो घूमता है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के गिर्द घूमता है, एडवर्टाइजिंग और दूसरी स्ट्रैटेजीज, लेकिन जब आपने भाई किसी सेट के सामने बैठ के अपने आप को, बल्कि अपने आप को बेचना होता है, बिल्कुल ऐसा ही, वो स्किल आनी चाहिए कि आप अपने आप को बेच कैसे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना, आपकी जबान में वो तासीर होनी चाहिए कि अगला आपकी बात बिल्कुल ऐसा ही। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जो मार्केटर्स होते हैं, जो स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में करते हैं, उनको सारे बुराते हैं, उनको अपने आप को सेल तो क्या करना है, इवन प्रोडक्ट को वो बता देते हैं कि जी डिलीवर भी हो गई और पैसा आपके अकाउंट में आ गया। यानी आपने उसकी अफादियत बतानी होती है कस्टमर को कि उसकी बेनिफिट क्या। हाँ, जो आप समझते हैं कि मैं इसको, मेरी को एडवाइस अगर ये होगी, आई वांट कि ग्रीनविच जो है ना वो अपने आप को इंजीनियरिंग के अंदर भी लाए। ओके, मुबश्शिर साहब, प्रोग्राम हमारा इख्तिताम हो रहा है। वन सेंटेंस और स्टेटमेंट अबाउट द वाइस चांसलर मैडम सी मोहम्मद। वंडरफुल लेडी, शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, और वो बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह उन्होंने लेके चला है। उनके अंदर उन्होंने कभी, एटलीस्ट हमारे साथ तो उनका जो रिश्ता था ना, वो बिल्कुल एक बड़ी बहनों की तरह, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक मेंटोर की तरह था। उन्होंने हमारी हर बात को सुना, समझा और हर चीज़ में हमें बहुत सपोर्ट किया। तो बहुत सपोर्टिव लेडी हैं, और यही वजह है कि आज तक यही शायद इस इदारे की कामयाबी का राज है कि ये चल रहा है, और हम उनको याद करके आते हैं। सही साहब के बारे में? सही साहब भी बिल्कुल, मैं ख्याल में वो मैडम का रेप्लिका है। बहुत खूबसूरत। सो मुबश्शिर साहब, ग्रीनविच की पावर या स्ट्रेंथ आपकी नज़र में क्या है? ग्रीनविच की पावर और स्ट्रेंथ जो है ना, वो इसकी फैकल्टी थी, जिसने एक मीडियम लेवल स्टूडेंट को या वीकर स्टूडेंट को पॉलिश करके, शाइन करके स्ट्रेंथ दी अपनी। नॉर्मली जितने भी इंस्टीट्यूट हैं दुनिया में, वो हमेशा टॉपर्स को लेकर आते हैं। मैं IBA की, हमारे ज़माने में IBA की तूती बोलता, तो वो तो सिर्फ क्रीम ले जाते थे। तो क्रीम से तो चले, आप क्रीम बना लिया आपने, लेकिन आप एक नॉर्मल आदमी को लेके, एक एवरेज स्टूडेंट को लेके, उस पर मेहनत करके आप उसको एक क्रीम बनाएं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कामयाबी भी यही है, कामयाबी इसी में, और यही वजह थी कि लोग इसकी तरफ बढ़े। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसमें, खैर मेरी एक स्किट भी आती है, मैं उसको बाद में ऑफ कैमरा सुनाऊंगा आपको। तो वो जिस वजह से हमें बड़ी ये हमने यानी एक हकीकत थी कि हम लोग जो थे, वी वर नॉट दैट गुड स्टूडेंट्स, नॉर्मल थे, एवरेज थे, लेकिन उन्होंने हम एवरेज स्टूडेंट्स के ऊपर मेहनत करके हमें बेहतर बनाया, अपने लिए बहुत बेहतर बनाया। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह के ग्रीनविच के जितने भी एलुमनाई स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं इस वक्त बड़ी अच्छी और रिस्पेक्टेबल पोजीशंस पर बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर अपने जगह। तो यही इसकी सक्सेस है इस इदारे की। थैंक यू सो मच मुबश्शिर साहब, आप प्रोग्राम के लिए अपने वक्त निकाला। आपका शुक्रिया। और ग्रीनविच की तरफ से छोटा सा एक तोहफा आप आए, एक चीज़, ताकि आपकी मेमोरी में रहे ये। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर। नाज़रीन, होपफुली आपने ये सेशन एंजॉय किया। आपने देखा कि मुबश्शिर अहमद की कितनी खूबसूरत ग्रीनविच के साथ यादें वाबस्ता हैं, और आप मज़ीद किसी अलमनाई को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। और उसके अलावा भी कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। प्रोग्राम आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ग्रीनविच का ऑफिशियल यूट्यूब पर चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. हुसूले जाह की खातिर नकज़ बिज़र के लिए ये मक्तबा है मिल्लत के हर बशर के लिए। सुबह की पहली किरण की तरह ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स, जो कि इस वक्त 60 की दिहाई में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने इरादों में मुस्तहकम और मजबूत, जहन में इल्म की दुनिया लिए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात खुश असलूबी से अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुगल, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। डॉक्टर ए.के. मुगल ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान में तालीम की सुबह को तरजीह दी और हमतन इस तगदो में रहे कि मुल्क कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के सिले में मिलने वाला सितारा इम्तियाज एक जीता जागता सबूत है। You know, my father was primary teacher and my elder brother was also primary teacher. And basically I wanted to be an engineer, but I ended up with agriculture engineering, and then I got masters in agriculture engineering from University of Sindh, and then I got a scholarship for doing masters at American University Beirut. Then I decided that I will be in education. The major reform, which was when I was chairman of University Grants Commission, a task force for higher education was constituted by the government of Pakistan, and Babar Ali and Mr. Qasim Lakha, co-chairman of that task force. I was one of the members, and we worked round the year to bring reforms in higher education. And the result was that Higher Education Commission was established. I believe in hard working. I believe in hard working and sincerity and honesty. I was not intelligent. I was hard working. मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत इनकी अपनी मेहनत है, तो he deserve it. और हाँ, इसीलिए इनकी है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। I've struggled to find words, powerful words that would accurately describe his presence in my life and his value to the educational system of Pakistan. Growing up in Pakistan, we always had to write that one essay, My Father. It was always a positive and an objective description of a person, which I doubt that an 8-year-old will ever understand. I am what I am because of my father. I am where I am because of his methodical fatherly practice and an academic leader. May Allah bless him with a long and healthy life. And thank you, Greenwich, for recognizing his accomplishments. I'm really proud of Baba for receiving the Presidential Award of Sitara Imtiaz. I think it is well deserved, for I have seen how hard he has worked towards contributing to the cause of education and his job. His life serves as a superb example for me and my siblings. Despite that, he has been a loving father to us and has always given his full and undivided attention. He has always taken interest in what goes on in our lives, be it my daily dose of story from first grade and now ranting about grad school. He is a very down-to-earth person with not even an ounce of arrogance.
He mingles with children and adults alike, charming them with his engaging personality. I would like to start by congratulating him on this indeed a very big achievement. He has made all of us very proud. So thank you for making us proud. This is indeed a very big achievement. And I don't think so I would be able to do such an excellent mentorship of my children like you've done for us. So thanks a lot for every single thing. I mean, it means a lot to me. I also want to thank Greenwich University for arranging this function and giving respect to my family. Being the eldest son, this means a lot. I'm humbled by this gesture. I thank each one of you sitting over there. I encourage those people who are good in their subjects, in their discipline. They must come to education. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. At Greenwich University, we have made the communication channel simple through our student portal. Enter your student ID and password. Click on Desk. You should change your password before moving forward. Upload your vaccination certificate on the portal. Your portal also has details such as orientation schedule, other important information such as academic calendar, information regarding registered courses is also just a click away. Don't forget to download your semester student ID card. Do keep a check on your attendance. Click on Class Schedule to see timings and teachers of your courses. Go back to the desk to see options for blended learning. You must download your semester invoices from the portal.
a track of your academic progress is easy. Check your grades through your student desk. Also reach out to us using the desk. Send your requests, feedback and complaints. Register online for the next semester. Information regarding SDC and societies and event invitations are present on your portal. For any queries regarding the portal, you may contact the IT department of Greenwich University. Greetings students, this is Shahir Hassan, student at Greenwich University, and today I'll be showing you guys around this university and we will be seeing some of the most important departments which you guys must be visiting now and then. So without wasting any further time, let's move in. Dear students, now we're here at the accounts department. So if you have any inquiry regarding the fee challan or the invoices, this is the place to come. And here you will meet the man behind this accounts department, Sir Muhammad Munir Khan, who is the manager coordination. Let's meet him. Welcome to all new batch Spring 2022 students. You always welcome for any assistance, any information to our department. So students, behind me, as you can see, this is one of the busiest departments at the start of the semester. Yes, this is the communication department. Here, if you want to add a major, if you want to change your major, if you want to add a course, if you want to drop a course, this is the place to go. Moreover, here you will meet Sir Rashid and his team. He will give you a minimum of 3 courses and maximum of 6 courses. Let's go and meet Sir Rashid. Usually, you're not permitted to go in, but we've taken special permission to make you guys meet Sir Rashid. So let's go in. So guys, this is the communication department, and here we will meet Sir Rashid. Assalamu alaikum. My name is Rashid from Office of the Registrar. Welcome to Greenwich University. Thank you very much. So students, this is the examination department. This department makes sure that you appear for your examination, for your favorite slip. So make sure that your dues are clear and make sure that you are not absent at more than 3 days on an entire course of the semester. Here, we will meet Sir Jamil, who is Assistant Controller Examination. Let's meet him. Hello, welcome to Greenwich. So if you want to inquire regarding your CGPA or your examination results or the Dean List certificate, this is the place to come. So students, as we have covered almost every valuable detail from your accounts invoices to your examination clearance to your communication department, if you want any further detail, you should acknowledge the document present over the portal. This is me, Shahir Hassan, signing off. I hope you have an amazing journey at Greenwich University. Senator Abdul Hasib Khan characterizes a dynamic personality, a diverse business acumen, and a great regard for philanthropy. He has served as a senator for the government of Pakistan between 2009 to 2015. He is the founder and chairman of Brooks Pharma Private Limited, sharing the international market in countries like Thailand, UAE, Philippines, Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Congo, Ethiopia, and Nigeria. He is also the chairman of Korangi Association of Trade and Industry. Senator Abdul Hasib Khan is also the founder of Brooks Health and Education Foundation, establishing various schools and dispensaries in underprivileged areas of Karachi. He
was awarded with Sitara-e-Imtiaz in recognition of his relentless services for uplifting Pakistan's trade and economy, as well as contributions to social welfare work. अपनी सलाहियतों को और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए सिर्फ नौकरियों के सहारे पे मत जाइएगा दुनिया में हमारी। जब हमारी दुनिया में आए तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए। मैं खुद भी 12 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बना था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम नथिंग। नौकरी भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, नौकरी भी करें, गवर्नमेंट की नौकरी भी करें, लेकिन अपनी सलाहियतों को अगर आजमाने का मौका मिले तो कोशिश ये करें कि एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अल्लाह की बातें माननी पड़ती हैं। तो अगर अल्लाह की इंसानों का अगर आपने ख्याल रखा तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। आ गई कम वक्त मारी। नी आ गई तू सैर सपाटे करके। पेट पूजा का कोई बंदोबस्त किया तूने कि नहीं किया है? क्या हो गया बाजी? एक मेरा पेट ਤੁਹਾਡੇ पे भारी पै गया। नी तेरा पेट तेरी तालीम भी साडे गले उत्ते पै गई है। सारी जिंदगी दर दर नचदी फिरी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜਾਂ यूनिवर्सिटियां दी फीसां भरियां। ऐ जलालत साडे किस काम दी है? अरे ना बाजी ना, तू फिक्र ना कर। कल मैंने ऑफिस बुलाया है इंटरव्यू दे वास्ते, दुआ करी। चल रब राखा। गल सुन, अभी मैंने कुछ खान वास्ते दे दे। ठीक है। Hi, I'm here for an interview. What's your name? Sara. आप सारा वहीद है? Yes. अच्छा, आप रूम नंबर 4 में चले जाए। ठीक है, थैंक यू। May I come in? Send Sarah in. Yes, I am Sara. Oh, yes, come in. Assalamu alaikum, Sarah. I'm the managing head of operations of this company, and he is my colleague. वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। So सारा, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैंने बीकॉम किया है। I'm sorry, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। Yes, but it was clearly mentioned in the job advertisement that a female accountant is required, and you are clearly a. जी आप प्लीज़ मेरी अपीयरेंस पे ना जाएं। मैं आई थिंक माय कॉमर्स बैकग्राउंड विल मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू दिस कंपनी। No, I don't think that you belong here. You may have the skills, but our company is not requires this type of people. जी आप ये कैसे बोल रहे हैं? आई एम सॉरी, वी आर डन हियर। आप जा सकती हैं। मुझे एक चांस तो दीजिए। नहीं, प्लीज़ लीव।
बाजी, ये बाजी। हाय मैं मर गई। बाजी कैसे कर लेती है, कैसे सह लेती है इन सब के ताने? नहीं दी रानी, हुआ क्या है? बाजी सारी जिंदगी बस यही सुनने को मिला है, तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज भी यही हुआ। ये तो होना ही था। तुझे क्या लगता है मैं क्यों सारी जिंदगी घुंघरू पहन के चल रही थी? तू क्या किताबें लेके फिर रही थी? चल अब रोना बंद कर, पहन ले घुंघरू। शकीला को बोल दूंगी, सिखा देगी तुझे सब। We urge the governmental and non-governmental organizations, private corporations, and business entities to come forward and play their part in the society by providing respectable earning opportunities to the transgender community to enable them to lead a healthy and happy life. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities, to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Hello and welcome. You're watching Greenwich Web TV and this is your host Umar Khan, and I'm here with another very special guest for today. Let me introduce my guest, and right next to me is Miss Sana Hashmi, who's a news anchor and an anchor person, a host and senior producer news at GTV, and a very charismatic personality as well. So thank you so much, ma'am, for being part of this show today. Thanks for inviting me. You're most welcome. How are you? I'm very well. आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नीड ऑफ द आर्ट टॉपिक है, नीड ऑफ द मोमेंट टॉपिक है कि एक न्यूज़ एंकर की या एंकर पर्सन की, मीडिया पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको अपना काम करना चाहिए. So when we compare the Pakistan news channels to the international forum, we see a vast difference. Why do you think is that? Well, उमर, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जब आप एक सिंपल सा मैं सारे लोगों को कहूँगी आप गूगल भी करें कि जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो आपको बताएगा, गूगल भी आपको ये कहेगा, टू गैदर द न्यूज़, टू इन्फॉर्म द पीपल, यू नो, लोगों को आप समझाएं, बताएं, आगाह रखें. और जिस ज़ाहिर है अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में भी इसका एक तज़किरा मौजूद है. बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आपको किसी तक ख़बर पहुंचानी है. अब उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखें, कुरान का मैंने तज़किरा क्यों किया यहाँ पर कि वहाँ पर आयत मौजूद है कि किसी पर झूठी या सच्ची बातें लगाकर बयान न की जाएं. अब मसला ये है कि जब हम इतनी इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी पर बैठे हैं, जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं आप, वहाँ अगर हम रियाकारी यानी कि आप आधा सच आधा झूठ और अपने मतलब की बात बताने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी माज़रत के साथ फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते, फिर आप फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं. और जब आप दुनिया से कम्पीट करने की, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हमारा जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है. बहुत सारे ऐसे सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम भी ले सकती हूँ, जिनके साथ हमने काम किया है, और उन्होंने हमें वो मीडिया एथिक्स शायद सिखाए जो आज की दुनिया में या आज के जर्नलिस्ट में हमें नज़र नहीं आते. तो हम इंटरनेशनल मार्केट की अगर आप कहेंगे फॉक्स न्यूज़ किस तरह खबर चलाता है सनाशमी, तो शायद
मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लोकल न्यूज़ नेटवर्क कैसे न्यूज़ चलाता है तो मेरी उस पर कोई कमांड नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ शिफ्ट है बहुत ज़्यादा। हर जिस तरह की भीड़ चाल जिसको आप कहते हैं ना, मतलब लोगों को पता नहीं है, बस खबर आई उसको पीटना शुरू कर दिया। इंटरनेशनली कोई भी इवेंट होता है उसकी एक मियाद रखी जाती है, उसको वो रिपोर्ट करते हैं, उसके साथ उसका बैशिंग नहीं शुरू कर देते कि उसको ड्रम लेके बजाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम इंफॉर्मेशन कम देते हैं लेकिन हम शोर ज्यादा मचाते हैं। तो इंफॉर्मेशन बहुत लेस है हमारे पास, बिकॉज आई एम सॉरी, फॉर सम रीजंस हम रिसर्च नहीं करते, हम नहीं पढ़ते और हम नहीं जानना चाहते। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस जो हमें दुनिया के जर्नलिज्म से अगर हम कम्पीट करने की बात करें, जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म है, हमारा जर्नलिज्म ज्यादातर रिफ्लेक्ट करता है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ। हम उसकी कॉपी कैट्स बनने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उसमें आगे भी चले जाते हैं। लेकिन आई एम प्राउडली सेइंग कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके लेवल पे नहीं पहुंचे जर्नलिज्म के अंदर, क्योंकि वो उनका जर्नलिज्म मोर लुक्स लाइक अ exaggerated movie to me, and thank God हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे, और अल्लाह ना करे कि कभी उस लेवल पे हम पहुंचे भी। बट आपने जिक्र किया शोर मचाने का, तो एक चीज जो नोटिस की एक आम आदमी ने कि सनसनी ज्यादा होती है ब्रेकिंग न्यूज की रेस के अंदर। न्यूज अक्सर होती नहीं लेकिन उसको क्रिएट किया जाता है, और जब एक चीज है नहीं और उसको क्रिएट किया जाए तो बात की जो क्रेडिबिलिटी है वो वहीं खत्म हो जाती है। देखिए, एक चीज आपने लफ्ज इस्तेमाल किया सनसनी का ना, सनसनी फैलाने के लिए खबर का होना, उसका वजूद होना ज़रूरी है जी। अब जब किसी चीज़ का आपने जैसे का वजूद ही नहीं है तो उस पर आप क्या खबर दे रहे हैं, ये कहलाते हैं गिमिक्स। और जो TRPs होती हैं वो इन्हीं गिमिक्स के थ्रू आपको डिलीवर हो रही होती हैं। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अगर आपका कैप्शन लिखा हुआ होता है कि ज़रा देखिए उसने उसका थप्पड़ क्यों मारा, पीपल नीड टू नो कि वो क्या हुआ है, और वो उसको क्लिक जरूर करते हैं। सोशल मीडिया का मेरा जैसा शायद थोड़ा बहुत, या मेरे ख्याल है आप जैसा आदमी बहुत कम होगा कि उसको जाके क्लिक करे, क्योंकि हमें पता है कि अंदर कोई फजूली चीज होती है, कोई काम का मटेरियल नहीं निकलेगा। बट टेलीविजन के मीडियम में क्या होता है कि यहाँ आपको TRP गेन करने के लिए समटाइम्स उस तरह का खबर देनी पड़ जाती है जिससे शायद आप जिसे कहते हैं ना रिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकते किसी सोसाइटी का। लेकिन क्यों कर रहे होते हैं आप? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स वो सारा काम कर रहे होते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर वही काम कर रहा है, इस वक्त लगभग अगर 72 चैनल्स हैं और वो काम कर रहे हैं 72 चैनल्स, उसमें रीजनल्स भी हैं और बाकी सारे चैनल्स भी हैं, लेकिन जो स्पेशली न्यूज़ चैनल्स हैं वो अगर कोई एक टिकर लगा दें कि फला शख्स ने थप्पड़ मार दिया SHO को या कुछ भी कर दिया, अब उसकी खबर आने में शायद बहुत टाइम लग जाए, उसकी खबर के अवामिल पता करने में बहुत वक्त लग जाए, लेकिन इस दौरानिए में जो कि लगभग 2 से 1.5 मिनट का होगा, सारे टीवी चैनल वही खबर नशर करना शुरू हो जाएंगे। और इसमें इस चीज को बिल्कुल मलूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा कि इसमें सनसनी का एलिमेंट ज्यादा है, इसमें खबरियत ज्यादा है, या इसमें हकाइक ज्यादा है, या इसमें सोसाइटी को आपने इंफॉर्मेशन देनी है। ये तीनों चीजें पस से पुश चली जाती है। वो जो एक एलिमेंट है थप्पड़ मारने का या चप्पलिश का या एक्सीडेंट का या किसी की बैशिंग का, वो सिर्फ प्रोमिनेंट होकर रह जाता है। राइट, एथिक्स का आपने जिक्र किया, जो एक ओरिजिनल जर्नलिज्म होता है और जो हम मीडिया स्टूडेंट्स पढ़ते हुए या जर्नलिज्म सीखते हुए जो आप सारे डूज एंड डोंट्स देखते हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपने क्या चीज़ नहीं करनी है। जितनी चीज़ें जो नहीं करनी होती, फॉर एग्जाम्पल शोइंग वायलेंस, शोइंग नेगेटिविटी, इग्नाइटिंग द पीपल फॉर अ सर्टन कॉज और एनीथिंग, ये सारी चीज़ें डोंट्स में आती हैं। बट पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स जब हम स्विच करते हैं तो 70 to 80% हमें चीज़ें यही दिखती हैं, आग जल रही हैं, बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एंड ऑल द नेगेटिव साइड। Why is that? अच्छा उमर, आपकी इस बात को मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि 2011 और 12 आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो आई थिंक 12-13 के बाद ये वाला जो एक एलिमेंट था सेंसेशनलिज्म जिसको आप कहते हो, या सनसनी के साथ डोंट्स पर जो एक तरीक़ेकार था, वो बहरहाल कम होना शुरू हुआ। हाँ, देखें, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट बहुत मेहनत के बाद आज आज़ाद हुआ है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल मैं इस गलती को मानती हूँ, तस्लीम करती हूँ, क्योंकि हम उस चीज़ का हिस्सा बने जब 2000 में मैंने इस जर्नी का आगाज़ किया था जर्नलिज्म की। तो उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बम ब्लास्ट भी नज़र आते थे, क्योंकि आपको पता है 9/11 के बाद सूरत हाल दुनिया की बदल चुकी थी। उस दौरान में हमसे जर्नलिस्टिक गलतियाँ हुई हैं,
हमने ब्लड भी दिखाया, हमने खुरेजी भी दिखाई, हमने लोगों को मरते हुए भी दिखाया, और हमने मरते हुए लोगों से ये पूछा भी कि आपका बंदा मर गया, आपको कैसा लग रहा है। लेकिन उसके बाद ही, एंड आई थिंक एज आई सेड दैट कि 2010 बिटवीन और मे बी द 11 हमने इस पॉस्चर को चेंज किया, और जो कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया का तैयार किया गया उसमें इन सब चीज़ों को रखा गया। और जो सुप्रीम, जो हमारे, जैसे मैंने कहा, जो सीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो पैरोकार थे बाकी दीगर जर्नलिस्ट, उनको समझाया कि आप जब टेलीविज़न पर कोई चीज़ नशर कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसको लोगों तक टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उसका इथिक क्या होना चाहिए, क्या ब्लड दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए तो कैसे दिखाना चाहिए, उसका बिलर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, एक एक्यूज से क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई फैमिली का कोई किसी के लवाहिकीन है तो आप उससे क्या बात कर सकते हैं। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया ने खुद तरतीब दिए, मीडिया के लोगों ने खुद बनाए। मैं ये बात फिर कहूंगी कि हाँ, गलती हुई है, और अब भी शायद कहीं माइनर से जाके, जैसे एक मुझे याद आ रहा है वाकया, पिछले साल की बात होगी, मैं दूसरे टीवी चैनल पे थी, ईद उल अजहा का मौका था और कुर्बानी हो रही थी, तो उसमें ब्लड दिखाया जा रहा था। खैर बहरहाल ये एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है, जो न्यूज़ रूम का प्रोड्यूसर होता है, न्यूज़ प्रोड्यूसर के, वो देखे एक एक चीज़ को कि जो वो एयर करने जा रहा है वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन प्रोड्यूसर से वहाँ गलती हुई, और एडिटर ने वो ब्लड जो है, जो गाय ज़िबा हो रही थी या जो नहार किया जा रहा था, ऊँट को नहर किया जा रहा था, वो पूरा ब्लड ऑन एयर चला गया। वो ऑन एयर गया ही था, मतलब सेकंड्स का, कुछ लम्हे का मेरा ख्याल है टाइमिंग आया होगा, कि मैं खुद बैक पर थी न्यूज़ फ्लोर पर, मैंने दौड़ कर वहाँ पर से चिल्ला के, आपको पता है न्यूज़ रूम का एक अलग माहौल होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाउड होके कहा कि ये हम क्या दिखा रहे हैं। तो हमने उसको उसी वक्त रोका, और फिर ज़ाहिर सरजनिश भी हुई, उन लोगों को उनसे पूछा भी गया कि ये गलती कैसे सरजद हो गई, क्योंकि हम एक मीडिया चैनल के लोग हैं, हमसे हम इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोजाना की बेसिस पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो यस, मीडिया एथिक्स ये हैं कि आप लोगों से, मरते हुए आदमी से ना पूछें जाकर कि आपको कैसा लग रहा है, आप मर रहे हैं, या उसका बंदा किसी के घर में कोई मतलब चोरी डकैती कुछ भी हो गया और आप पूछें उससे कि आप उस वक्त कहाँ थे, वो कहेगा अगर मैं होता यहाँ तो मैं, ये सब तो ना होता ना, मतलब आई मीन समटाइम्स हम बहुत ही फुलिश किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। कॉमन सेंस होना जरूरी है इसमें। एक और चीज पे अगर हम आए, देखें आपने सीजन जर्नलिस्ट का जिक्र किया, तो हमारे पास बहुत अच्छे सीजन जर्नलिस्ट हैं who are on the top level, but when we talk about the reporters and everyone who's on the field और जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने सीजन जर्नलिस्ट उनका शायद पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, बट जो ज्यादातर मटेरियल आ रहा होता है ऑन दैट इज रिपोर्टर्स who are creating stories around the city and around the country। तो एक कोई बेंचमार्क होना चाहिए, कोई खास एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट आई हैव नोटिस, मैं किसी को यहाँ डिमीन नहीं करना चाह रहा या पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, बट व्हाट आई हैव नोटिस कि लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा छलकती है। मैं किसी की अंग्रेज़ी का मजाक यहाँ नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन जब आप फॉरेनर से बात कर रहे हैं या आप अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका नेशनल जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर ये चीज़ पोर्ट्रे हो रही है कि ये पाकिस्तान का रिपोर्टर है और ये न्यूज़ चैनल का वो रिपोर्टर है जिसकी ये ज़बान है, जो क्लियरली बात भी नहीं कर सकता। तो जो आपका इमेज इंटरनेशनली जा रहा है वो हर तरह से, चैनल का भी, मुल्क का भी और उस रिपोर्टर का भी, वो बहुत डिस्टॉर्टेड जाता है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो आपने किए। एक तो आपने कहा कि रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ गई ना। देखिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि हमारे यहाँ वर्कशॉप्स बहुत होती हैं, रिपोर्टर्स की भी होती हैं, प्रोड्यूसर्स की भी होती हैं, और शायद मेरे ख्याल एंकर्स की भी होती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो नहीं होती। ये एक डिलेमा है, और ये डिलेमा मुझे लगता है इसलिए भी है कि मेरे बाद की जो जनरेशन अब मैं देख रही हूँ, अपने बात की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो हमारे सामने जिस तरह से काम कर रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत कम कैपेसिटी रखती है सीखने की। उसको समझाया भी जाए तो शायद वो उस तरबियत से नहीं समझना चाह रहे होते हैं। अब दूसरा सवाल जो आपने कहा, एक तो देखें ट्रेनिंग का फकदान है। मीडिया टीवी चैनल्स के लोगों को मैं यहाँ से ग्रीनिच के इस स्टूडियो से इस बात का ज़रूर पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने लोगों की ट्रेनिंग्स करवाएं। आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को दुनिया भर से, यहाँ पे बड़े बड़े इदारों के नाम आपको लेके बता सकते हो, मतलब लोग आए थे यहाँ, हमने ट्रेनिंग्स हासिल की, हमने रॉयटर्स से हासिल की, हमें बताया गया कि हाउ टू एडिट, हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोग्राम्स, हाउ टू एडिट द न्यूज़ एंड हाउ टू एडिट द प्रोग्राम, न्यूज़ की लिखने का तरीका क्या है, कैप्शन कैसे बनेगा।
आई मीन बहुत ही निटिग्रिटीज में जाके हमारी ट्रेनिंग हुई है। लेकिन अब मैं वो बार बार बात दोहरा रही हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है हमारे रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग की। वो लगता है कि माइक पकड़ के बस बोले जाना है, क्या बोलना है, किस स्पेस में बोलना है। देखिए, गुफ्तगू करते हुए दो मयार होते हैं। जब आप किसी से बात करें तो आपकी बात मुकम्मल तौर पर उसको समझ आनी चाहिए और आपका लहजा इतना शफाफ होना चाहिए कि अगर वो आपके जुमले गिनना चाहे तो वो गिन ले कि आपने 1 मिनट में 70 अल्फाज बोले कि 100 अल्फाज बोले या लफ्ज बोले। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। फिर जब आप बात करते हो अंग्रेजी की या उर्दू की या जिस भी आप जुबान में बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी का तो मामला ये है उमर साहब के ये हमारी कोई मदर टंग तो है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें फ्लुएंट होना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कोई तीसमार खान हैं तो फिर उसके लिए भाई पढ़ लिख के आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, जो काम आपको आता नहीं वो काम ना कीजिए। जिस लहजे या जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड ही नहीं है तो आप अगर उस पर ना भी बात करें तो कोई उसमें मजायका नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल इमेज की बात करते हो तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। देखिए, नेशनल मीडिया पे जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई मैस कॉम करके आया हुआ होगा, इल्ला माशाल्लाह होगा। तो अगर इल्ला माशाल्लाह लोग मैस कॉम करके आए हुए हैं तो वो कैसे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरह डिलीवर करेंगे। मैंने इनिशियली बात ये की थी कि एक एंट्रेंस पे बेंचमार्क बने, कोई रिक्वायरमेंट्स हो, क्योंकि एक जो इमेज बना हुआ था वो ये कि जी आप कहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते तो मीडिया में आ। देखो, एक ये भी उमर, मैं बड़ी अक्सर आप जैसे स्टूडेंट्स और दीगर लोगों से जब हमारी मुलाकात होती है, हम लेक्चर्स पे जाते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि ये भी एक तरह का ट्रेंड है कि आप क्या करते हैं जी, मैं मीडिया में काम करता हूँ, क्या करते हैं जी मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्या करते हैं जी मैं एंकर हूँ, क्या करते हैं जी मैं रिपोर्टर हूँ। एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ना ड्रम्स बन गए थे, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। मैं हर दूसरे लड़के लड़की से पूछती थी, वो कहते थे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो प्लीज बी क्लियर इन योर फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू डू इट, व्हाट यू वांट बी, मतलब आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स की नहीं लेकिन और दीगर लोगों की बात करी हूँ। मैं बेतहाशा ऑडिशन ले चुकी हूँ, मुझे अंदाजा है, मैं बच्चों को देखती हूँ, वो बिल्कुल उनको अंदाजा ही नहीं है कि उनका फोकस क्या है, क्लैरिटी नहीं है, डीफोकस्ड हैं कि उनको आप कहीं पे भी लगा दें। मतलब मैं जब उनको फॉर्म फिलिंग के लिए देती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो जो स्पेस होती है वो खाली होती है और वो सोचते हैं कि शायद वो मुझे भर देनी चाहिए कि मैं उनको बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। देखो, मैसकॉम पढ़ें, जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही थी मैं उसको बिल्कुल नहीं मानती कि चैनल्स का कोई फ्यूचर नहीं है और लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जाए। डिजिटल मीडिया की अपनी अहमियत है और नेशनल टेलीविजन की अपनी अहमियत है। लेकिन देखो, जब आप पढ़ रहे हो आपको ये नहीं पता कि इस 4x4 के कमरे में 2 लाइट्स की कैपेसिटी है या 4 लाइट की कैपेसिटी है। बाउंस ऑफ लाइट क्या है, विदाउट पेपर बटर पेपर बाउंस करेगा या नहीं करेगा, या इसके ऊपर जेल लगाना पड़ेगा। तो प्लीज यार फॉर गॉड से आप फिर उस चीज को जब तक नहीं समझोगे आप डिलीवर नहीं कर सकते। मैसकॉम के बच्चे जो पढ़कर आ रहे हैं, या तो वो आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने मैसकॉम नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं बड़े क्लियरली आपको बता रही हूँ कि मैं मैसकॉम स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होकर सीखा है। मुझे पता है कि ट्राइपॉड को कितना मुझे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, एंगलिंग कैमरे की क्या करनी है, इंचेस ऑफ फ्रेम्स भी हमें सिखाए गए। जो मैसकॉम का स्टूडेंट आता है वो बाय बुक जाता है। देखो, जब आप फ्लोर पे यहाँ खड़े में हैं और हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट ये आपने मुझे बना के दिया है, हो सकता है कोई और प्रोड्यूसर आए सीनियर और वो हमें इससे अच्छा फ्रेम बना के दे दे, राइट? तो वो कैसे बनाएगा? देखो, मैं और आप बाय बुक जाएं अगर, तो हम कहेंगे कि नहीं, इस रूम की डायमेंशन के हिसाब से मुझे लाइट इतनी बाउंसी मिल रही है, मेरा फ्रेम सेटल्ड है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, तो मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन कोई और सीनियर आदमी आके हो सकता है हमसे बेहतर बात करे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होगा। बट आई एम ट्राइंग के बाय बुक जरूर जाएं, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस काउंट्स, राइट? अब एक बात आपने की कि क्लैरिटी नहीं आती है बच्चों को, तो अब का जो हमारी यूथ है, एक मेरा भी बहुत एक सोच है इसके ऊपर और मैं काफ़ी कंसर्न हूँ इस बारे में भी कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उनकी इंटेलेक्ट का पता चलता है। एक बच्चे की इंटेलेक्ट बनती है उसकी सराउंडिंग से, जो वो देखता है, जो वो सुनता है। तो ग्रोइंग अप एक बच्चा अपने बचपन से, अपने टीनेज से जो अपने टीवी पे देखता है
उसका उसकी इंटेलेक्ट में एक बड़ा अहम किरदार है. Agree. एंड नाउ ग्रोइंग अप, जो न्यूज़ चैनल पे एक बच्चा, अगर मैं तो अगर कभी ज़िंदगी के अंदर मेरे फ्यूचर हो तो मैं किसी भी बच्चे का अपने न्यूज़ चैनल सबसे पहले बैन करूँगा कि आपको इजाज़त ही नहीं देखने की. कितना किरदार है हमारे न्यूज़ चैनल का हमारी इंटेलेक्ट को आज ये बनाने में. उमर, आप न्यूज़ चैनल की बात ना करें खाली, ओवरऑल मीडिया, मैं इसलिए आपको लेके जा रही हूँ उस तरफ. आजकल एक ड्रामा बहुत हिट चल रहा है पाकिस्तान में. हर तीसरे बंदे को उस ड्रामे का पूरा गाना भी आता है, उसका जिंगल भी आता है, उसके कैरेक्टर्स के नाम भी पता है, नाम भी ले लेती हूँ ड्रामे का. सिर्फ तुम के नाम से है, पता नहीं क्या, मुझे तो पता भी नहीं है, शायद मैं कुछ इसी तरह का नाम है, आई थिंक. देखो, सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है. जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है वो ड्रामा रिफ्लेक्ट करता है, वही न्यूज़ रिफ्लेक्ट करती है. देखो, रेप हो रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, अब्यूज हो रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, मिसकमिटमेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, आप लोगों को मिसबिहेव कर रहे हैं तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ. अगर सोसाइटी इतनी सेटल्ड हो जाए कि वहाँ इतने इम्बैलेंस किस्म के इमोशंस ना मिले मुझे, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा दिखाने के लिए. मैं आपको यहाँ मिसाल देना चाहूँगी. BBC आप सब लोग देखते होंगे और हम भी देखते हैं. एक सर्टेन टाइम पर BBC के ऊपर डॉक्यूमेंट्री चलती है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? उनकी FPC में क्या खबरें दिखाने के लिए नहीं होती? क्या उनके लैंड पर इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही होती कि वो ना दिखाएं? बट उनका एक नेचर है, उनको एक चीज़ में सेटल्ड कर दिया गया सोसाइटी को कि फॉर दैट सर्टेन पीरियड आप दिखाएंगे और इसके बाद आपने मूड को स्विंग कर देना. हमारे यहाँ बिकता यही है हमारे. That's the irony, because देखो, आपका देखने वाला आपको नहीं देखेगा. आप अगर 4 किताबें लेके बैठे ना कि आज हम बात करते हैं कि अशफाक अहमद साहब ने क्या लिखा था, या ना चले आज ऐसा करते हैं. Why is that? Because we fed them that. अगर आप अच्छा काम करेंगे और अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे. मेरा कहने का मकसद है, नॉट ओनली न्यूज़, जितना मीडिया है, जो आपने बीच में डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, और अगर हमारी सोसाइटी में रेप हो रहा है, चोरी हो रही है, क्राइम हो रहा है, तो एजुकेट करने का भी तरीका है. होता क्या है कि व्हेन वी ट्राई टू मेक समथिंग टू एजुकेट देम, पीपल गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम दैट एंड कम टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ इट. एब्सोल्युटली राइट एंड आई एग्री. लेकिन मैं तारिक अजीज साहब को सभी सारी दुनिया जानती है. तारिक अजीज साहब से एक दफ़ा मेरी टेलीफोन पर बात हुई. मैं उनको अपने टेलीविज़न शो के लिए मदऊ करना चाह रही थी कराची, लेकिन वो नहीं आ सके. बहरहाल, तो उनसे मैंने पूछा कि सर, बड़ी एक सवाल का तो मुझे जवाब देते, तारिक अजीज कैसे बन गया, मतलब आज तो कोई सोच ही नहीं सकता. तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने वो काम किया जो कोई नहीं कर रहा था. उस तरह का शोज, उस जमाने में जो शोज हो रहे थे वो आपको भी पता है, स्टूडियो 2:45 हो रहा था, स्टूडियो 2:30 हो रहा था, मोइन अख्तर शो हो रहा था, यस सर नो सर हो रहा था, और बहुत सारे दीगर शोज हो रहे थे. गिफ्ट देना, लोगों से सवाल करके उनको अप्रिशिएट करने का काम तारिक अजीज साहब ने शुरू किया. उन्होंने कहा, ये मैंने लोगों को सिखाने की मेरी एक या पहले पाकिस्तान टेलीविजन का एक विजन था कि हम लोगों को एजुकेट भी करें और उनको प्रेज भी करें साथ साथ. अब क्या हो रहा है, उसका बिल्कुल अलग हो रहा है. आप लोगों को सिर्फ, आई एम सॉरी, फकीर बना रहे हैं या भिखारी बना रहे हैं. True. ये ले लो मोटर बाइक, ये ले लो कपड़े, ये ले लो गाना, और ये ले लो एजुकेट करने की जगह डांस करवा रहे हैं, ये चीज उनका मजाक बनवा रहे हैं. इसी एलिमेंट पे एक केक रखा है, आप कह रहे हैं इस केक को आप मुंह से खाएं, और वो पूरा केक खाते हुए बंदी की शक्ल बिगड़ गई या खातून की शक्ल बिगड़ गई. देखो, मैं आपसे फिर उसी बात पे आऊंगी, व्हाट सोसाइटी नीड्स. ये बात मुझे तारिक साहब ने कही, नहीं, सोसाइटी अभी जो मैंने अपनी पिछली बात की है उस बात की नफी करेगी, क्योंकि वो एक सीनियर आदमी, उन्होंने बिल्कुल मुझे सही सीख दी कि जो दिखाओगे ना वही लोग सीखेंगे. अगर हम पॉजिटिव चीजें दिखाना आज से कोई एक चैनल शुरू कर दे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे कार्टून नेटवर्क्स देखते हैं तो वो भी हिंदी देख रहे होते हैं डबिंग्स में. हाँ, हमारे पास हमारे बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है. हम अपने बच्चों को ना गेम्स दिखाते हैं, ना इंडोर गेम्स के बारे में बताते हैं, ना आउटडोर्स. हम बच्चों के लिए कोई कंटेंट जनरेट ही नहीं कर रहे. जिस जमाने में मैं बच्ची थी, हमारे पास बड़ा कंटेंट होता था भाई, हम देखते थे, चाहे आप ऐनक वाले जिनका मजाक उड़ाते रहे बैठे हुए आज के दौर में, लेकिन हम उसको देखकर बड़े हुए. कैम कैंडी कार्टून आता था, हमारे लिए 5 बजे का वो टाइम बड़ा प्राइम टाइम होता था. हम कहते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कैम कैंडी जरूर देखना है हमने. तो निंजा टर्टल्स एंड सो ऑन एंड ऑन, हम देखते थे. तो आपने बच्चों को
रिमूव कर दिया, आपने सिर्फ वायलेंस को दिखाना शुरू किया, तो मीडिया ने अपना शिफ्ट जब चेंज किया कंटेंट का, तो सोसाइटी ने भी उससे वही डिमांड करना शुरू कर दी कि ओके वी नीड मोर, वी नीड। मैं यहाँ पे जो जितने किड्स कंटेंट है उसकी एट द सेम टाइम तारीफ करना चाहूँगा। वी हैव लेजेंड ऑफ मार्कोर, 3 बहादुर ग्लोबली अवार्ड्स जीते हैं। वी हैव द बुर्का एवेंजर्स, एक नई चीज़ ब्रांड्स ने शुरू की है कि वो अब अपने ब्रांड को बच्चों को टारगेट करके कमांडर सेफ गार्ड हो जाते हैं, और डर2 आ जाता है जर्म से फाइट करने के लिए, और 10 चीज़ें आ गई हैं। तो एट द सेम टाइम वो चीज़ें भी चल रही हैं। बट ये जो आपने कहा ना कि कोई एक चैनल, यहाँ एक चैनल से आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, क्योंकि एक चैनल जब अच्छा काम करेगा और बाकी वही कर रहे हैं तो उस एक को साइडलाइन कर दिया जाएगा और बाकी पाकिस्तान टेलीविजन लोग कितना देखते हैं, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि अगर आप पीटीवी देखते हैं तो आपको दिखता है कि पाकिस्तान में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। और यही एक मेरी बात पहले हमारी बात में रह गई कि एक सीन चल रहा है किसी जगह पे, XYZ जगह पे, और मैं चैनल स्विच करना शुरू करता हूँ फ्रॉम 1 to 20। मैंने 20 डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स स्विच किए और एक ही सिनेरियो दिख रहा है और उसके मुझे 20 अलग एंगल्स दिखे। नाउ बीइंग अ कॉमन मैन आई एम वंडरिंग कि इसमें से हकीकत क्या है, क्योंकि 20 के 20 लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। किसी जो एक चैनल किसी को हीरो दिखा रहा है, एक उसी को विलन दिखा रहा है, एक उसी को सपोर्ट कर रहा है, और एक कह रहा है कि नहीं इनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। व्हाट टू बिलीव? इस पे भी मैं आपको एक वाकया बता देती हूँ। हम बैठे हुए थे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा था कि हम कहते थे कि हुकूमत भी हम बनाते हैं, हुकूमत भी हम गिराते हैं। ये जर्नलिस्ट की अप्रोच थी। और वहाँ पर जो जर्नलिस्ट बैठे थे वो बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट थे, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे लोग। कहने का मकसद क्या है इस बात के पीछे, कि जब जर्नलिस्ट को अपनी पावर का अंदाज़ा है कि वो जो दिखाएगा लोग उसको अब्जॉर्ब कर जाएंगे। अब क्या हुआ ये है पिछले 20 वर्षों के दौरान कि सोसाइटी डिवाइड हो गई। तो ये तो हमने सारी बातें कर ली और सारे प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम अपनी आवाम को, उनकी मेंटालिटी को, जितने लोग सब गलत काम कर रहे हैं उनको सुधार सकें, बट कहीं से तो स्टार्ट हो सकता है, कहीं से तो वी कैन मूव एन इंच टूवर्ड्स बेटरमेंट। एग्रीड ऑन दैट उमर, कि देखें कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, ठीक है। हमारे तो दरिया भी सूख गए। मसला ये है कि किसी एक को जैसे आपने कहा कि फ़र्क पैदा करना पड़ेगा या पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे एंटरटेनमेंट साइड हो, चाहे न्यूज़ साइड हो, या फिर दीगर और जो जॉनर्स हैं उसमें काम करने वाले लोग हों, टेलीविज़न के अलावा रेडियो का मीडियम हो, अखबार हो, या फिर डिजिटल मीडिया हो आपका, कहीं बेहतरी की शुरुआत करनी पड़ेगी। जितनी नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं हम, अगर हम थोड़ा सा इसमें एजुकेशनल एलिमेंट ऐड कर दें तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बिल्कुल ख़त्म या आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ायल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें जो बुनियादी चीज़ है उसमें ज़रूरत है आपको पढ़े लिखे जहनों की, विजनरी लोगों की, जिनके पास जहन हो, उनको सिर्फ ये अहमियत ना हो कि मेरे कितने व्यूज़ आ गए, मेरी कितनी TRP आ गई, या मैं कितना लोगों में मकबूल हूँ। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो बात बता रहे हैं या कह रहे हैं या दिखा रहे हैं टेलीविज़न पर या किसी भी मीडियम पर, उसकी अहमियत क्या है और उससे उनकी सोसाइटी की पॉजिटिविटी पे कितना बेहतर असर पड़ेगा। आई थिंक अगर कोई एक या दो भी ये शुरुआत कर देंगे तो बाकी भी सब फिर उसी लाइन पे चल पड़ेंगे, मेरा ख्याल। राइट, वेरी वेल सेड। और इस बात को अगर मैं समराइज करूं तो आई वुड से कि जी सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल करें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका ज़िंदगी में पर्पस क्या है। इंसान में उसकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं तो यू कैन नॉट गिव ऑनेस्टी और गिव एनीथिंग बैक टू द वर्ल्ड। तो चाहे आपका पर्सनल सक्सेस हो, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ हमने स्टार्ट की थी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आपने लोगों तक जब कोई कहानी पहुँचानी है तो आपको इस बात की श्योरिटी हासिल करनी है कि वो बात आपकी 100% करेक्ट हो, ऑथेंटिक हो, ताकि क्योंकि जब आप टीवी पे आके कोई एक बात करते हैं तो लोग बगैर उसकी तस्दीक किए दुनिया में जाके वो बात फैलाते हैं, और इस चीज़ की एडवांटेज
लोग लेते हैं जो गलत काम कर रहे हैं कि आप कुछ भी बात फैलाएं और वो यूं सोसाइटी में फैल जाती है। तो एजुकेट करना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेट करने के साथ साथ सही बात बताना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी एट ग्रीनिच यूनिवर्सिटी वी डू हैव आवर मीडिया डिपार्टमेंट, जहाँ मीडिया स्टडीज़ के अंदर यही कोशिश करते हैं कि जब हमारा बच्चा फील्ड में जाए तो वो एथिक्स, इंटेग्रिटी और किस तरह से काम होता है वो सीखे और इस मीन वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर सके, जहाँ पे अच्छा काम करने पे हमेशा आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अगली दफ़ा मुलाकात हो तो हमारे ये जो मसाइल हैं जो हम फेस करते हैं मीडिया के अंदर नेगेटिविटी की तरफ, वो बेहतर हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया, बहुत शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम। सो बिल्कुल आपने सुना सना हाशमी को, द सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर एट GTV, ऑल्सो अ न्यूज़ एंकर, a host and a very charismatic personality, as you just heard. So until next time, Pakistan Zindabad. Dr. Sirajuddin Aziz is an experienced banker having served in Pakistan, United Kingdom, China, Hong Kong, United Arab Emirates, and Nigeria, covering a wide spectrum of portfolios. Despite a prolific banking career spanning over 3 decades, he also is a true teacher at heart. His scholarly contributions span across various domains, including human behavior, economics, ethics, leadership, management, politics, and religion. Mr. Aziz is a regular contributor to national and international dailies, journals, and magazines. He has published several works of scholastic distinction, including The Art and Craft of Management, Corporate Pakistan, Insights to Leadership and Governance, In Quest of Mirage, The Essence of Islam, and Mongolian Pot, among others. He has also featured in televised discussions on finance and economy and is an audible speaker across various fora on a wide array of subjects. In 2015, Greenwich University conferred upon him the honoris causa degree in recognition of his multidimensional services. आज सबसे पहले मैं मुखातिब होना चाहूँगा उन वालिदैन को जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि आज का दिन आपके लिए बाइस मसरत होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों ने एक इल्म हासिल किया है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से, जो मुझे पूरा यकीन है वो बरूए कार लेकर आएंगे अपनी आगे ज़िंदगी में और कुछ ऐसा काम करेंगे इस कौम मुल्क के लिए कि आपका भी सर बुलंद रहेगा हमेशा फ़ख्र के साथ। तालिब इल्मों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आइंदा जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माशरे के लिए काम कीजिए, अपने मुल्क के लिए काम कीजिए और ऐसा कोई काम कीजिए जिससे हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके वालिदैन का सर झुके नहीं बल्कि फ़ख्र से ऊँचा रहे। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers.
Usman PEG creative thinking and leadership that e-marketers currently offer. The market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Mr. Sirajuddin Aziz is an institution within himself. He is regarded as one of the leading bankers of this day and age, not only on a national level but internationally as well. His contributions to the executive financial sectors of banking like marketing, foreign trade, corporate credit and trading and development, to name a few, are groundbreaking. Mr. Aziz started his career in 1977 at the Bank of Credit and Commerce International. After making his mark, he moved to different professional assignments, which took him to numerous countries, such as Nigeria, Abu Dhabi and England, where he rendered his exemplary services. Mr. Siraj is currently heading the Habib Metropolitan Bank as President and CEO. Under his unparalleled leadership, the bank has seen immense growth, with the network growing impressively in all parts of Pakistan. He is also one of the founding members of UBL and served as CEO of Bank Al-Falah, where he led the bank to sustained growth. With 406 branches in 5 countries and an HR complement of over 10,000 employees. He has vigorously promoted Pakistan as a trading partner and attracted large investments in his capacity as bank head. He has proceeded on to actively overseeing the entire spectrum of banking operations of various banks for over the last 15 years. So you've held top positions in the banking sector. What was the one thing that made you choose this sector, and why do you keep going on in it? To be honest, I did not select banking as a profession. I went there accidentally, in the sense that everybody from my class while we were at the university were applying for a classified ad response in the Daily Dawn. Okay. And from one interview to the other, it was a journey, and suddenly I decided to plunge into banking. The fact that I have clung to it is the fact that I realized over the period of time that I spent there that banking is not about money, banking is not about economics, banking is about people, and people interest me. So in your book, Bitter and Sweet, you've wrote that you gave meaning to your father's life. How was that? The book that you're mentioning is actually an autobiography of my father. I have only put in an afterword and I've called it my book. It's essentially largely written by him. The fact that my child gives a meaning to my life today is the same fact that I narrated that I gave meaning to my parents. And that meaning became more pronounced and more important in his life because I lost my mother at a very young age. So I was his motivating factor to go on with life. That's why I mentioned to him that I gave meaning to his life. And other than that, you have been an inspiration to all of us. That's very kind of you. Is there anything you would like to give as a message to our graduating students? Please, I would implore upon each and every single graduate today that please look at the faces of your parents. They're smiling, they're happy. Don't pull out that smile ever from their face. Let it remain there, radiating and smiling and giving you strength for your life. Thank you so much for giving us your time, sir. Thank you. Pleasure is mine. Aziz, an inspirational personality and a noted visionary of our time, is not only binded to the banking and financial sectors, but is also a teacher at heart. He yearns to see the youth of today taking our country to greater heights. He has penned a number of poems and writings on different topics and is also an avid reader. Mr. Siraj's career is one which has seen growth at an exponential level. He has been the recipient of numerous awards, all highlighting the milestones that he has acquired over the time of his illustrious career.
he is a man of many talents and is duly credited for it. Despite being a distinguished banker and having a strenuous schedule, Mr. Aziz is still a dedicated family person. He has always been and remains a man of virtue. When I got married, we went abroad, we went to Nigeria. His first posting was when I got married. Before that, he has been staying at London, Abu Dhabi. But at Lagos, we had a very good time there. He's a very good husband. और यानी कि we take advantage of it also because he's good. और बस एक शिकायत है because टाइम ज़्यादा नहीं देते ये घर पे और he comes around about 9:30 at times. ज़ाहिर है we hardly because he's very fond of his children. So even though they don't get the time they need. Or he's not fond of going out, having food out, just wants to be at home with his children. तो जो कुछ भी है हम लोग छोटी सी फैमिली है. Good. He is humble, disciplined, and extraordinarily giving. He inspires those he meets with his undiluted humbleness, sincerity, and compassion. He delivers every word he speaks with a dignified thoughtfulness and humble sweetness that leaves his audience overswept with a sense of calm and an urge to listen to more. For his significant contributions to the development of his beloved country's financial sector and for his honorable public service, the degree of Doctor of Financial Management, honoris causa, is being awarded to Mr. Sirajuddin Aziz at the Convocation 2015 of Greenwich University, Pakistan. जब मेहनत, हिम्मत, जहानत, लियाकत और खिदमत इंसानियत की सिफात इंसानी वजूद में ढल जाएं, तो सरदार मोहम्मद यासीन मलिक का खाका सामने आता है। सरदार यासीन मलिक एक अहद साज और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। फ़रोग़ तालीम के लिए अनथक मेहनत, मुस्तहिक़ीन की मुसलसल खिदमत और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खिदमत बा-तर्ज़ इबादत आपकी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। सरदार यासीन मलिक 1941 में बर्रे सगीर में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद 9 साल की उम्र में पाकिस्तान तशरीफ ले आए। इल्म की शमा से मुआशरे को मुनव्वर करने वाली शख्सियत यासीन मलिक ने अपनी इब्तिदाई तालीम लियारी से हासिल की और बाद अज़ां हुसूल इल्म की गरज से सिंध मदरसतुल इस्लाम और सेंट पैट्रिक कॉलेज से मुंसलिक हुए। यासीन साहब की इब्तिदाई जिंदगी उसरत से इबारत है। वो बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब सड़क किनारे आवीज़ा बरक़ी कुमकुमों तले मुताला किया करते और इसी इल्म, दोस्ती, अज़्म हिम्मत, मेहनत व लगन और जहद मुसलसल की बदौलत आप कठिन लम्हात और मुश्किल औकात को शिकस्त देकर कामयाबी और कामरानी से सरफराज हुए। सरदार यासीन मलिक जहां मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दुखी इंसानियत की खिदमत और बेसहारा लोगों की मुआवनत के साथ साथ फलाही और रिफाई इदारों से भरपूर ताउन करना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बतौर नायब सदर अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान, आपने कुदरती आफात से मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात किए वो यकीनन काबिले सताइश है।
सरदार यासीन मलिक ने उबूरी हुकूमत में न सिर्फ सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर खिदमात अंजाम दी, बल्कि अपनी लियाकत और वक़ी तजुर्बे की बदौलत वजीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर हुए। बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल सरदार साहब की खिदमात को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। दर्स व तदरीस की फरोग व तरवीज और तलबा को जदीद उलूम व फनून से आरास्ता करने के लिए यासीन साहब ने सैकड़ों तालीमी इदारों की माली मुआवनत फरमाई और आज भी मुतादिद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सरपरस्ती के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यासीन साहब को इनकी गिरा कद्र समाजी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज अता किए गए। अवामुन्नास की बेपनाह फलाह व बहबूद के एतराफ में इन्हें साल 2004 में मुल्क का बेहतरीन आदमी करार दिया गया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Then these are qualities that are, mashallah, needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. Exactly. And I'm glad that you recognized his services to society and awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu alaikum. सर, आपका ताल्लुक सरदार यासीन मलिक से बहुत पुराना और गहरा रहा है। क्या आप उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब आपने सरदार यासीन मलिक के बारे में पूछा तो यकीन कीजिए नाम सुनते ही फरिश्ता खतलत इंसान की याद आ जाती है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कभी कि नूरजहां ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीयत हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ता मौजूद है तो वो सरदार यासीन मलिक हैं। उनको आप देखिए, चलते फिरते फरिश्ता हैं, नहायत खुश मिजाज, नहायत नरम गो, नहायत अनजूमिंग, किसी किस्म का तसन्नुन नहीं है उनकी बातों में या उनके रहन सहन में। ये वो चीज़ें हैं कि जो उनको सबसे नुमायाँ करती हैं। पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ बहुत कुछ है, तनहा काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसमें अपने कारोबार के लिए, अपने कैरियर के लिए कोशिश करें कि दयानतदार लोग आप ढूंढें। ग्रेजुएशन में थे तो हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक शेख हमारे क्लास में पढ़ते थे। उनका केमिकल का काम था, जहाँ से मेरे कैरियर शुरू हुआ कारोबार का। मैं वहाँ पर एज ए सेल्समैन काम करता था कॉलेज के टाइम के बाद में। तो 1% कमीशन मिलती थी मुझे, और मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए मोहम्मद सिद्दीक शेख को। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और अल्टीमेटली एंडेड अप व्हाट आई एम टुडे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा प्रैक्टिकल लाइफ में ही वाज माय गाइड, और ऑफ कोर्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में पहले नंबर पे आते हैं। माँ का जिक्र है तो मेरी माँ की दुआ मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल माई फादर हैज़ बीन 105 years old। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी अपने बड़े भाई के सामने या अपने वालिद के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो।
सरदार यासीन मलिक पाकिस्तान और अक़वाम आलम के दरमियान बेहतर तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शोबे तालीम की बेहतरी और मईशत की बहाली के साथ साथ यासीन साहब ने अपनी जिंदगी दूसरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और अवामुन्नास को राहत पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी सरदार यासीन मलिक को इनकी गिरा कद्र खिदमात के एवज एजाजी डॉक्टरेट की सनद तफवीज करती है। रसूल का जन्नत रसूल की और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर तो झोली भर तो झोली भर तो झोली तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता। The Greenwich Global Program gives students an opportunity to study in over 5 continents with universities like the University of Bangor, the University of Hertfordshire, the University of Leeds in the UK, with universities such as the University of Murdoch in Australia and the University of Sigmund Freud in Austria, just to name a few of our partner universities. The 2+2 program gives students the access to study at Greenwich University for the first 2 years and then move on to any of our partner universities around the world and carry on with global careers anywhere around the world. And I'm one of the alumni of Greenwich University. Currently, I'm the Group Director of HROC Group, which is a Malaysian-based HR business solutions organization, which started off from Karachi and later on expanded to Malaysia. At this point in time, this is one of the leading companies which is helping other organizations to have a proper setup in Pakistan with having all resources available. Wherever I am today, it's probably because of what I was taught back then when I was at Greenwich University, and I'm quite thankful to my faculty and my Vice Chancellor and everybody who was a part of the Greenwich University. They put in all their effort to ensure that they shape out an ordinary person into somebody who can bring in a change into the society. So I have represented myself at a lot of places, on international forums, local forums, and everywhere. I've mentioned very proudly that I am not a foreign graduate from any university of Harvard, but I'm actually a graduate of Greenwich University.
and I'm quite thankful to it. So thank you, Greenwich, for shaping me out. Looking forward to having more for it. Hello, my name is Aqib Sayed. I am currently the Group GM Marketing for Multinet Pakistan Limited. I am a very proud alumnus of Greenwich University. Greenwich was a great experience in overall shaping my personality in the corporate world, and I thank you everyone at Greenwich and the current students and wish them a lot of success. Thank you so much. So welcome to a session of the High-Level Political Forum. We need to rethink the idea of governance by placing SDG 16 at its center. Institutional and policy innovations at local, national, regional, and international levels can accelerate the implementation of SDG 16 and promote integrated whole of society approaches. This is essential in order to tackle complex challenges such as increasing inequalities, social and economic insecurity, climate change, and rapid technological disruption. As the pandemic continues to rage, public service institutions in conflict-affected countries have been tested in their capacity to mount a coordinated response. Slow, ineffective, or unfairly distributed responses have fueled simmering discontent and distrust in the state and undermined social cohesion and economic resilience. Renewing the social contract, strengthening the rule of law, democratic institutions, and rebuilding trust between people and governments has emerged as key to making progress on the SDGs. The poor and vulnerable are more exposed to its impact and face more difficulties in adjusting to the new normal. We therefore need to ensure that our responses are well targeted and effectively reach the poor and vulnerable. For this, accountable governance is the key. Уважаемая госпожа модератор, мы хотели бы сделать короткую ремарку по теме цели устойчивого развития. Moderator, we'd like to make a statement on SDG 3. The Russian scientists have already developed 4 vaccines for COVID on their relevant technical platforms. The first of them, Sputnik V, has now being used in 60 countries, being used by more than 1.5 billion people. We are ready for future cooperation with other partners in the future to put an end to the COVID-19 pandemic and to ensure efforts are made to achieve SDG 3. Bonjour, permettez-moi de m'exprimer en français. Monsieur le... Myself in French, if I may. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has had a spectacular impact of the world's efforts to reduce poverty. It also provides us with an opportunity to build a better future. The context of SDGs is key in terms of inclusive and sustainable development. These partnerships should include governments at all levels, civil society, the university world, multilateral organizations, and companies and civil society. We also would call for an approach based on human rights to build more peaceful, fair, and inclusive societies while ensuring that no one is left behind. Thank you, Madam Moderator. We believe that SDG 17 is of particular importance following the pandemic because it is this SDG on international partnerships. And today, in fact, we do hope that it's the SDG after the pandemic. We live in strange and unpredictable times. Times when the threat of a pandemic and restrictive measures imposed by those in charge has made peaceful assembly even harder than before. Times when inclusive and transformative efforts to counter deep-rooted inequalities are essential. In this decade of action, Sweden remains a dedicated ally in the pursuit of peace, at home and throughout the world. The EU has recently also taken steps for the integration of fighting inequalities
countries in its development cooperation. Promoting and upholding the rule of law is a major priority for the EU internally and externally. The COVID-19 pandemic has set back progress on governance. In its external action, the EU will continue to support progress on democratic governance, rule of law, justice reform, and more effective taxation. Peace, progress, and sustainability are built on the foundation of justice. Nepal's constitution has internalized such ethos and institutionalized the peace process and political transformation. And I'd like to start with one that was made by Ambassador Idris on the need to think of a new social contract to prevent what he called simmering discontents. And this, I think, is a crucial issue that has come out of the pandemic. It not only has caused immediate suffering, but it has exposed inequalities and exclusion that were in existence beforehand, but not so visible. And that has great risk of grievance and of, in the end, the rise of social unrest. So this social contract, I think it will be important, of course, that it covers all the SDGs. The SDGs are the best medicine, but with particular emphasis on leaving no one behind. Trying to use the leverage and influence of the international community in order to build national fiscal capacities rather than inadvertently undermining them. I mentioned two ways in which I would say those capacities, alas, have been undermined in the past. One, the relentless ideological pursuit of free trade, even when that has meant reducing or eliminating tariffs on luxury goods. And secondly, via deeply entrenched resistance of members of the international community to setting a good example by paying taxes and tariffs themselves when they are in host developing countries. And lastly, even if we mobilize the resources and have effective governance, the question, of course, is governance for whom? And there, I think, the principle that's come out very clearly in the COVID crisis and will come out again in the climate crisis, that we need to have equal rights to health and to a safe environment. Principles that, by the way, are deeply embedded in national constitutions around the world need to be upheld and fought for. It's not enough just to have them in constitutions. They have to be more than words written on paper. Corruption has diverted funds from investment in healthcare. Where corruption is systematic, governments tend to spend less on healthcare, thus increasing inequalities among societies, but also among countries. As the UN Secretary General pointed out, we're facing the same storm, but we are not in the same boat. In the midst of the campaign for a decade of accountability for the SDGs, we at the Contraloría, the Chilean Supreme Audit Institution, are committed to doing our part. At the same time, the crisis has shown us that institutions that are ensuring transparency and accountability have become more important than ever. Supreme audit institutions can carry out audits at all levels of government. They have the essential task of assessing how taxpayers' money is used and whether the measures taken are transparent, sustainable, and inclusive. COVID-19 has exacerbated our systemic vulnerabilities to crises and exposed the failure of macroeconomic governance, as 40 out of 43 countries are experiencing an unprecedented increase in debt to GDP ratio in the Asia Pacific alone. Yet, business as usual continues, as almost 96% of the support provided by multilateral banks and international financial institutions to Asia Pacific countries in 2020 are loans, with meager amounts in grants or debt relief. On the other hand, inequalities have been on the rise. Less than 1% of the region's 4.6 billion population is worth almost 54 times more than the combined GDPs of Asia Pacific's least developed countries, further widened by the pandemic. So rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, financing for development processes should help them address corporate capture, debt distress, illicit financial flows, tax evasions, and neoliberal instruments like investor-state dispute settlement. The very lesson from COVID-19 is to strengthen public healthcare systems, enfeebled by massive privatizations. And yet, almost 76 out of 91 IMF negotiated loans in 2020 pushed for further belt tightening that could result in deep cuts to public healthcare and social protection systems. Such systemic issues have escalated health crises into economic, social, and environmental crises. As a result, decades of progress on poverty, hunger, health and education,
gender, water and sanitation, inequalities, climate action, and stronger institutions is being reversed. The transformative new social contract requires urgent action to redress inequalities within and among countries, reconfigure power relations across socio-economic and political spheres, dismantle neoliberal capitalism, democratize governance, and ensure climate justice. COVID-19 has intensified the need for accelerated, united action in light of the devastating toll the pandemic is taking on global health, social and environmental security, and progress on Agenda 2030. Interlinked challenges such as COVID-19, climate change, diminished biodiversity, and continuing crises rooted in economic, judicial, and human rights inequalities inform our call for accelerated action. While some people have access to healthcare, medicines, and vaccines, too many suffer without recourse. While human rights abuses go unpunished and access to justice remains the domain of the few, societies will not know peace and inclusion. These are well-worn truths. But civil society plays a pivotal role in advocating for healthy lives and well-being, reversing widening inequality, and promoting a peaceful, inclusive world. There is broad agreement among governments that we need new global tax rules, but we still don't have an inclusive body where those rules can be negotiated. Instead, decision-making on global tax rules is being led by the G7, the G20, the OECD, which is also known as the Rich Countries Club. This is resulting in rules that do not reflect the interest of the world's poorest countries, but also in rules that do not effectively ensure that the world's wealthiest corporations and individuals pay their share of taxes and do not represent a global consensus. When it comes to international negotiations, we as UN youth representatives experience many hurdles in our advocacy and negotiation efforts. Young people are described as active agents of peace, which means that equal treatment and representation should occur. We want to change the narrative from passive stakeholders to active shareholders. This is why we are also working on the establishment of a framework for the youth in order to participate as equals in negotiations. This notion was agreed upon by all member states in SDG 16, and this so-called generational test will be our main tool to translate that notion into practice. In conclusion, by the words of the former Secretary General Kofi Annan, we are never too young to lead, and you are never too old to learn. This youth-led campaign pleads the UN member states to request an advisory opinion from the International Court of Justice and the linkage between climate change and human rights, as well as the integration of the concept of intergenerational justice. International governance, standards and rules for trade, investments, taxation, and financial flows must underpin national efforts to achieve more equal and inclusive societies. 6 years into the implementation of the 2030 Agenda, the international community is still off track on achieving SDG 16+, and we've unfortunately seen further stagnation and even serious backsliding of progress, even before the COVID-19 crisis. Civic space is shrinking, human rights abuses are on the rise, faith and trust in institutions is waning, conflict and fragility is deepening, and inequalities are widening, leading to blossoming protest movements in many countries where people still feel left behind. We need to continue to seek cooperative approach to shared challenges, not only to be better prepared and to create resilience for future shocks and crises, but also to reinforce trust and strengthen security for all. As we continue to relentlessly encroach on nature and degrade ecosystems, we endanger human health. We need to rethink our relationship with nature and build back better. It has been recognized that business as usual is no longer an option. We need to rethink the way we generate wealth, the way we live, produce, consume, move, and eat. We must shift to a new paradigm of resource use that is socially equitable, economically resilient, and environmentally healthy. Research by UNEP International Resource Panel proves that it is possible. Muchas gracias. Saludo a todos los. Thank you very much. And greetings to all the participants in this important political forum. The indigenous peoples have indicated that the Agenda 2030 for Sustainable Development and the SDGs provide us with a historical and unique opportunity to ensure that the more than 370 million indigenous people in at least 90 countries are not left behind. And yet, we continue to be victims of serious violations of human rights. Access to justice for all persons with disability who have experienced gender-based violence during the pandemic by guaranteeing accessibility and reasonable accommodation in the judicial process. So this meeting is adjourned, and thank you very much again to all of you for your active participation.
Dr. S.M. Munir is a dynamic personality with diverse experience in various sectors, including tanneries, textiles, and banking. He is the chairman, Dean Textile Mills Limited, and director, Dean Pharma Products Limited. He is a consummate industrialist and was awarded with the Best Export Performance Trophy by the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry and the Gold Medallion Award from the International Export Association, United Kingdom. Dr. S.M. Munir was awarded Ambassador of Hope by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, on 15th January 2021. Dr. S.M. Munir was awarded the Lifetime Achievement Award by the President of Pakistan in 2012. He was also awarded Sitara-e-Isar and Sitara-e-Imtiaz in 2006 and 2007 respectively by the President of Pakistan in recognition of his outstanding public services for the cause of humanity. His contributions and achievements go beyond the economic sphere into the education sector as well. Greenwich University bestowed upon him the honoris causa degree in recognition of his tremendous services for the business sector. मैं तमाम जितने पेरेंट्स हैं जो बच्चे आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ कि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चे आपके लिए एसेट साबित होंगे। ये आगे जाके अच्छे काम करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, जो वालिदैन मशवरा दें उस पर अमल करें, कि बड़ों का तजर्बा हमारे से बहुत ज़्यादा होता है। हम समझते हैं आप बहुत समझदार हो गए, नहीं, टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी बात सुने, उनकी पीस ऑफ एडवाइस को हुक्म मानें। My name is Ishan Shah. I'm a proud alumni of Greenwich University, batch of 95. I was Dean's List here as well, apparently, and yeah, it's been great. The memories are tremendous. It's great to see everybody out here as we celebrate all these years. I'm basically from the banking profession and I'm part of the media and broadcasting, and all of that combined, it's been a fabulous, fantastic experience to be part of this institution. I wish you all well and hope that we meet again. Take care and have a great day. Mr. Ali Jilani. He's a development practitioner focused on democratization of state and society in Pakistan, with over 10 years of advocacy at the national, regional, and global level. He has expertise in capacity building, advocacy, and research for governance reforms concerning access to justice, political, economical equality, human rights, social development, and environmental protection. He currently serves with the Karachi Research Chair, a policy think tank driven for evidence-based advocacy around sustainable development. Mr. Jilani, the floor is yours. Thank you, moderator and APRSEM, for the opportunity. The decade of action and delivery for sustainable development can only be realized if systemic barriers like global inequalities of wealth, power, and resources, international economic trade and monetary frameworks, militarism and conflict, patriarchal authoritarianism, marginalizing governance, shrinking democratic spaces, as well as a guilt-free pass on means of implementation commitments are addressed. The unprecedented COVID-19 crisis has reinforced the need to address such vulnerabilities caused by neoliberal globalization and flawed macroeconomic governance. ODA is falling short of its commitment of 0.7% of GNI, evident of the fact that only 6 countries could meet their ODA targets in 2017, with the overall contribution amounting to $147.2 billion against the required investment of US $5 to $7 trillion to achieve the SDGs. On the flip side, wealth and resources continue to flow from developing countries through illicit financial flows, tax evasions, capital flows, asset stealth, trade mispricing, and profit shifting by multinational corporations, where the data shows
that the developing economies lost over 7.8 trillion between 2004 and 2013, with the outflows increasing at 6.5% every year, twice as fast as the global GDP. The terms of discussion around official development assistance need to change from an act of benevolence to that of responsibility for global north, reckoning the historical debt owed to the developing world after centuries of colonial plunder and its continued patterns through neo-imperial neoliberal tactics. People of the Asia-Pacific reject official development assistance used to catalyze private sector engagement, achieve trade, military, and political objectives of donor countries, and its substitution with climate financing, refugee costs, or debt cancellation as recently proposed by the Development Assistance Committee. ODA needs to be reformed, reviewed for impact, and held accountable for failure to deliver on the commitments rather than being reduced to buzzworded negotiation outcomes going one step forward, two steps back. Debt stress is another key challenge exacerbated by COVID-19, where increased debt financing along with economic downturn will lead to higher government debt to GDP ratio expected to rise to 49% in 2021 among the least developing countries, while the pandemic generally affecting a much larger group of 40 out of 43 countries in the Asia Pacific. Reiterating the Secretary General's appeal reckoning COVID-19 situation, we cannot resort to the usual tools in such unusual times, so we need strong multilateral commitments to address debt distress, having pushed poor countries into generational debt traps, leaving virtually no fiscal space for effective COVID recovery or sustainable development priorities. Trade as a critical MOI need to be democratized through structural reforms prioritizing people and the planet over profits, upholding the essence and multidimensionality of the Agenda 2030, safeguarding state policy space. Localization of SDGs shouldn't mean the absence of accountability mechanism at the global level. To ensure the establishment of global reform entities for SDGs compatibility impact assessment of taxation architecture, trade and investment agreements, and synergizing multilateral cooperation to avoid corporatocratization of the globe. Rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, the processes should help them address macroeconomic pressures embodied in hegemonic trade agreements through conditions of market deregulation, massive privatizations, corporate capture of resources and governance, and neoliberal instruments like ISDS, among others. In terms of technology, the corporate control of data as the raw material for the fourth industrial revolution and concentration of technological innovation in the hands of a few technology giants must not be allowed to compromise privacy, hinder technology transfer, impede the capacity of developing countries to develop their technological capacity, marginalize human workforce, or undermine local knowledge systems. Policy emphasis on digitization and technological advancement must ensure a civil society-led thorough review of the potential adverse effects on the environment, the social, cultural, economic, civic, and political rights of the people. Our decade of action demands the dismantling of neoliberal development framework that destroys the environment, starves people of resources, and strips them of rights, and criminalizes those who stand for justice. The people of the Asia Pacific demand development justice. If the Agenda 2030 is to be endorsed as the global social contract between people and governments of the world, it's high time they walk the talk. Thank you, Chair. Thank you very much, Jelani, for those very cogent comments. I'm sure that the participants have taken note of them and will bring them up in the breakout discussions. We would like to introduce you with the student of Greenwich University, Ibad Mahmood. He has completed his BBA Marketing and currently completing his MBA in Supply Chain Management. Nigat Welfare Trust was started on 1st February 2014 on his beloved mother's name as she is no more in this world.
Negat Welfare Trust is a non-profit organization. Negat Welfare Trust wants to work for the betterment of society by providing individuals with basic necessities of life and free medical facilities. Along with studies, Ibad is passionate about serving humanity and is the managing director of Negat Welfare Trust. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. Certified Deloitte faculty member and business advisor, Mr. Sufyan Yousfi is a partner and head at one of the world's topmost consulting firms, Deloitte, where he serves as a lead business partner for NASA, an international development organization. Mr. Yousfi graduated from Greenwich University and went on to prove his mettle at Carnegie Mellon University, where he also served as a lead recruiting partner and a board member. Mr. Yousfi has been a part of Deloitte's commercial practice in New York City, serving multiple Wall Street financial service clients, large banks, private equity firms, and hedge funds. At present, he oversees multi-dimensional teams tasked with operational resilience, internal controls, cost optimization, trust and transparency programs. His client services include advanced machine learning, artificial intelligence, data analytic capabilities, and managing large-scale operational transformation programs. He has also published in Respond, Recover, Thrive, amongst other digital media platforms. John is one of the most engaging
young men that I've had the pleasure of teaching here at Carnegie Mellon. I met him 6 years ago, and we've become friends, and that has broadened my perspective more than it has his. I'm glad, and looking at Sufyan, it makes me even more confident to say that the Greenwich University prepared him to get this far, and then he certainly worked hard to realize his own dream. अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम करें, दुनिया में अपना नाम बनाएं, तो अपना जो बेंचमार्क है ना कि आपको क्या बनना है या क्या करना है, वो काफ़ी ऊपर रखें. He is a loving husband and a true friend. He is always there to help anyone and everyone who's around him. He genuinely cares for people and loves to propel them forward. His positivity is infectious. He loves to spread it around, and he is the life of every party. ज्ञान के बारे में बताना चाहती हूँ. वो शुरू से बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा रहा है, पढ़ने में भी अच्छा था, बहुत सोशल था, बहुत सारे इसके दोस्त अहबाब, और हम हमेशा ही समझते थे कि बहुत अच्छा नहीं करेगा क्योंकि ये सारा सोशल बहुत था, इसकी दोस्ती बहुत थी. In recognition of his achievements, Greenwich University presents him the Alumni Excellence Award 2022. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Japan is an island country in East Asia, located in the Pacific Ocean. It lies to the east of the Sea of Japan, the East China Sea, China, North Korea, South Korea and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea and Taiwan in the south. The kanji that make up Japan's name means sun origin, and Japan is often called the land of the rising sun. Japan is a member of the UN, the G7, the G8 and the G20. The country has the world's 3rd largest economy by nominal GDP and the world's 4th largest economy by purchasing power parity. It is also the world's 5th largest exporter and 5th largest importer. Japan ranked 1st in the country brand index. Japan is a developed country with a high standard of living, and the country is ranked high in the Human Development Index. The Japanese population enjoys the highest life expectancy of any country in the world and the 3rd lowest infant mortality rate. Japan is the highest ranked Asian country in the Global Peace Index. Pakistan and Japan have a history of glorious relationships spanning more than 6 decades. Both share age-old ties of common cultures, traditions, outlook and consciousness. Pakistan's relationship with Japan is based on mutual trust and respect. Both countries have worked for regional peace and stability. Greenwich University's socio-cultural and educational tour is also a step forward by a top-ranking private university in Pakistan to develop people-to-people relations between the two countries. I'm very thankful for Greenwich University. They took us to Japan, where we visited many different places. Over there we went to Tokyo Tower. We went to Hosei University, Disney World, we went to Nissan Production Plant,
and many different places. The experience was very different. It is much cleaner, much safer over there, and the people are very nice, but they are quiet, but they are very workaholic. People in Japan were very nice, very helpful. There might have been a language barrier, but they never hesitated to help us out every time we got lost. I think the city itself was very clean. They were very punctual about timings. 5 o'clock in the morning used to be the rush hour at train stations, and I think that's amazing. I don't think I've ever seen or met people like that who were so work focused, who are so focused generally in life, and I think that's pretty amazing. I don't think Japan would have been a place where I would have visited otherwise. So thank you, Greenwich University, for giving me this opportunity. Japanese people are workaholic. They wake up at 5 o'clock in the morning. They're very determined. Like a couple of people that I met, they're doing part-time jobs. Like, Japanese people are so determined that they have 3 jobs at a single time. So one job from 9 to 2, and then so on and so forth. And they're very workaholic people. They're always working. They're always up to something. The norms of Japanese people are very clear, that they're very honest with whatever they do. They're very determined, as I said before, and they're very useful. Like they're very helpful. Whatever problem that first of all, there's a language barrier that we faced in Japan. But other than the language barrier, through determining their actions, they're very helpful. Like wherever we got lost and whatever we wanted to find out, they're very helpful in communicating that with us. Hosei University was a wonderful experience. It was a big university, and it was very good. Like we did a presentation there, and it was very resourceful as well. I'm very thankful to Greenwich University to take me as part of the delegation, and I would love to go to Japan another time. Mount Fuji was surreal. To be honest, it was something I saw it first time in my life, and it was so scenic, it was so beautiful. I remember when I was going up towards to look around the Mount Fuji, I could literally see the clouds touching my foot and all that, and I could literally feel the pressure of air. It was getting really hard for me to breathe, but it was amazing. It was breathtaking view. To be honest, when I was going to Japan, I was really excited about their technology and to see what they have got, how technological advanced they are. I couldn't agree more that country is completely technically so advanced. When I went there to the factory of Nissan, I saw literally machines doing work over there. Like literally they were just walking beside us, and it was something really new for me. And looking at them made me realize that how technically advanced they are. They don't need they don't need labor. They've got machines to do the labor work. That's differently done in Pakistan, because over here there's more of a human labor than the technical labor. But over there I saw machines doing work, so it was something amazing. Hosei University was a great experience, and I thank Ms. Seema Mughal, who is the Vice Chancellor of Greenwich University, to give me the opportunity, because over there I went on the stage to give out the speech about Greenwich University. It was something really, really good experience, because over there was like Japanese people. They were living like different cultural and from different ethnic backgrounds. And over there, when I was giving speech about my university and how amazing it is, I think I felt really, really great.
रसूल का जन्नत रसूल की और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर तो झोली भर तो झोली भर तो झोली तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं मांगा, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं। Hi, my name is Zara Anwar Funachawala. I am heading cost control at Bank Alfala Limited. I am a proud alumni of Greenwich University and very thankful and appreciated for laying foundations for my success. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you.
Hello, my name is Kareem Teli and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. The journey at Greenwich was absolutely amazing for me because I learned a lot. It gave me and taught me a lot of lessons, gave me a lot of hardships, heartaches, joys, celebrations and special moments, due to which I am here at my destination today. Well, over the last couple of years, our company has grown into a more versatile business, and as I am managing the food division of the group, we have introduced different brands, different product lines besides ice cream as well. Besides the frozen division, which is called Igloo, we now have a different division called by the name of Homemade. We introduced different kind of frozen parathas, puris, chapatis, which is instant, ready to cook within 2 minutes. This is a good achievement for us because we weren't doing that at all. We were just focusing on ice cream initially, and then we just transformed ourselves into a frozen food company as well. Besides that, in the last couple of years we introduced our own chocolate brand by the name of the Chocolate Factory. I believe we're going to be introducing that product line into the market as well for the normal consumers. So we currently supplying to all the industries and businesses which produce different kind of desserts, cakes, pastries, and we produce chocolate chips and cooking and baking slabs. Well, there has been multiple things. It's not just one thing that makes a person who you are today. I believe there are many factors involved, including my education. I did my bachelor's from Greenwich University, and then I went for my master's abroad to Boston University. Did a different kind of degree there, innovation in technology, computer information systems, which made me learn a lot throughout my educational time. And then when I came back to Pakistan, I implemented those strategies here in my business where I worked, and that created a huge moment for me. Obviously, to be here, I mean, education is not the only thing. You have to give time to your family, to your loved ones, spend quality time with them, maybe to relax your mind, watch good quality content, videos, movies. So I mean, your life should be balanced. If your life isn't balanced and you're just doing one thing and you're focusing only on that particular thing, there is going to be a time that you're going to divert yourself, or you're going to get tired of that particular thing. So I mean, one should have the passion to do the job which he or she likes, and once they have that passion, they can do anything in this world. I mean, there are people who are going to say that you can't do this or you can't do that. But I mean, if you have the passion and the courage to do something, then you just have to be positive and just work after it, and you're going to reach your destination soon. Well, the need of the time is follow your passion, follow your heart. I mean, you cannot do something which somebody else tells you to do. I've met a lot of students, I've had a lot of interviews with different people, and they usually say that I'm doing this particular degree or particular program just because my parents told me to do so, or my elder brother or sister told me to do so. This isn't going to help you a lot in your future, because if you are doing a marketing degree and your interest is media science,
I mean, you're going to get the degree obviously, but it's not going to help you in the future because you're not going to pursue your career in that particular field. Or maybe even if you do, then you might not be good at it, or you're always going to be addicted or diverted to the things which you like. So I mean, follow where your heart leads you to and focus on that, work positively on that things, and I believe with over a period of time you're going to feel a change in yourself, and once that change arrives, your life is going to change forever. Well, for me, Greenwich is a one big happy family, and all those people who are a part of Greenwich should also feel the same. There are a lot of things to do at Greenwich. I spent most of my time at Greenwich when I was having my classes, and I used to have the gap between the classes as well. So I usually used to stay back at the university and used to play sports, maybe play badminton, cricket with friends, sit and enjoy in the cafeteria with friends. This is also needed in life, because I mean, if you just study, then your mind is just going to get blocked at one point of time, and then you cannot take in more information and data. So to do these things, I mean, you need to relax your mind, you need to calm down, you need to be happy, because if you are happy, then you can do anything. So be happy, make others happy, and make your family proud by doing whatever you desire. Hello, my name is Kareem Teli, and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. Placement on job, internship during and after the studies. Overall personality grooming courses. Scholarships and financial assistance. Credits earned at Greenwich University are transferable to all the recognized universities around the globe. Affordable tuition fee and student loan facility to pay the fee in installments. Boost your career by earning internationally recognized certificates, diplomas, degrees. Corporate social responsibility and co-curricular activities. Internationally qualified faculty with rich industry experience. Multidisciplinary trainings by national and international conferences, workshops and symposiums. It will provide you with regular career counseling and guidance sessions to help you in your practical life. To develop entrepreneurial skills via Entrepreneurial Incubator. National and international social, cultural and educational tour for students' exposure and skill development. You will develop versatile skill sets that will apply across diversified sectors. Working independently and decision making. State-of-the-art campus with all the essential facilities in the posh area of Karachi. With Media Lab, Computer Lab and high-end classrooms, we have it all at Greenwich University. Assalamu alaikum everyone, I am Omar Khan and I am the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events
starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. हुसूल जा की खातिर नकज बिजर के लिए ये मकतबा है मिल्लत के हर बशर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें आप अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हैं। तो आइए और ज्वाइन करें CSR सोसाइटी, और जिन लोगों ने CSR को ज्वाइन किया है मैं उन तमाम मेंबरान को इस सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं। Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. अशर सोसाइटी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की अहम तरीन सोसाइटी है।
इसमें आपको सीखने के बहुत मौके मिलते हैं। मैं मेंटोर हूँ ग्रीनविच अशर सोसाइटी का, और मैं आपको वेलकम कहता हूँ जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और जो फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जो कि हर इवेंट्स को कवर करती है। तो इसमें सीखने के मौके और सोसाइटी से कहीं ज़्यादा हैं। तो आइए और ज्वाइन करें ग्रीनविच अशर सोसाइटी। In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर तो झोली, भर तो झोली, भर तो झोली, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं भागा, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं।
सोसाइटी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की अहम तरीन सोसाइटी है। इसमें आपको सीखने के बहुत मौके मिलते हैं। मैं मेंटोर हूं ग्रीनविच अशर सोसाइटी का, और मैं आपको वेलकम कहता हूं जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और जो फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जो कि हर इवेंट्स को कवर करती है। तो इसमें सीखने के मौके और सोसाइटी से कहीं ज़्यादा हैं। तो आइए और ज्वाइन करें ग्रीनविच अशर सोसाइटी। Sultana Siddiqui, a woman of substance, a woman of courage, a woman of international fame. Sultana Siddiqui came from Hyderabad, Sindh, a historical city that has produced legends in many fields. She studied at a government high school, then at Government College for Women. She did her BA Honours and Masters in Comparative Religion from Sindh University. Oh, she's a role model. बच्चों की तालीम में she's a role model. और फिर उन्होंने इकोनॉमिकली अपने को खुद दो पैरों पर खड़ा किया। तो तीनों she's a role model. Very hard working, intelligent हैं और बहुत ज़्यादा उनकी नज़र जो है वो मुस्तक़बिल में काफ़ी होती है। She's a very good planner. बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने सिर्फ अपनी सलाहियत की बिना पर यह मुकाम हासिल किया है, और सबसे अच्छी खूबी यह है कि उसने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को इतना आली तालीम और तरबियत दी है कि वो आज ज़िंदगी में बड़े कामयाब हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि वो हम सब की बड़ी ख्वाहिश है कि इस तरह के रोल मॉडल हमारी सोसाइटी में बहुत होने चाहिए, सुल्ताना जैसे। Sultana Siddiqui joined PTV in 1974 and took the most difficult task, production of programs for children. She then expanded her horizons with producing music shows and from there moving on to dramas. In 2005, Sultana Siddiqui launched her first TV channel, Hum TV, with a very enthusiastic team of family, friends and fellow workers. Hum TV quickly turned into the talk of the town and then the world. I think Sultana Siddiqui leaves a legacy of great professionalism. She's probably a woman leader, who has given empowerment to a lot of women, and in Pakistan, not just in Pakistan, but the entire subcontinent Asian region, she's probably the only president of a broadcasting network who has taken this network to a level where no other institution has been taken by a woman. मोहब्बतों से गुंदी एक शख्सियत है जो सिर्फ मोहब्बतें फैलाना जानती हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत से काम भी सिखाती जाती हैं। इंसान को पता ही नहीं चलता और इंसान उनके पास सिर्फ बैठा होता है और उनसे सिर्फ बात करता है, तो उस थोड़े से टाइम में भी रोज़ जितनी देर मैं उनके साथ बैठती हूँ मुझे लगता है मैं कुछ नया सीख के उस कॉन्वर्सेशन में से निकली हूँ। एंड आई एब्सोल्युटली लव हर। आई थिंक she is one relationship that I'm proud of. I think she's an amazing mother, and the motherly love and motherly affection and motherly advice she would give to us, she gives to everyone, and she makes everyone treat as special. And I cannot think of any mother or any professional better than, of course, my mother. मम्मी ने जो हमारी फैमिली को एक स्ट्रेंथ दी हुई है ना, I think it's unbelievable. It's basically a learning experience for everybody. और मैं कहती हूँ कि 3 बहुएं डिफरेंट बैकग्राउंड से, 3 बेटे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फिर इतने सारे बच्चे, उसके साथ साथ वो दुनिया का वो हर काम कहती हैं हमसे कि करो, और कहती हैं जो चीज़ तुम लोगों को करनी है उसमें और बेहतर करो, बैठो नहीं, क्रिएटिव बनो। हम सब क्रिएटिव हैं और कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि घुटन है या आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनकी लाइफ अगर आप देखें तो वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशनल सिर्फ नहीं है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशनल भी है और थोड़ी सी हमारे ऊपर एक बर्डन भी है कि वी नीड टू डू बेटर, वी कैन नॉट लेट हर डाउन एंड वी नीड टू प्रूव हर कि वी कैन डू बेटर एंड help her achieve the goals further. Now Hum TV has 2 more siblings, Hum Masala TV and Hum Sitare.
Sultana Siddiqui has been behind the introductions of many renowned names in the industry. Abda Parveen, Tina Sani, Ali Haider, Nazia Hassan, Shazia Khushk are some of which come to mind. I think that Sultana is a remarkable woman. She's one of those people who doesn't need degrees to demonstrate her skills. She has the most potent communication skills in the field of television broadcasting. She has converted her skills into a legendary, I think, demonstration of what is possible within the context of clean, wholesome, and artistically well-honed entertainment in Pakistan. In her long media career, she has won many national and international awards, including the prestigious Pride of Performance Award from the Government of Pakistan. Sultana Siddiqui is truly a pride of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्ताना सिद्दीकी से सुल्ताना आपा तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब सक्सेस हो जाती है, जो आपका विजन होता है, जिस जगह आप जाना चाहते हैं, अगर वो आपका हो जाए तो फिर सारे जो हैं मंजिलें आसान हो जाती हैं। इस मकाम पर पहुंचने में कोई तो रोल मॉडल होगा आपकी ज़िंदगी का। मैं रोल मॉडल अपने बड़े भाई मज़हर सिद्दीकी को समझती हूँ, जिसने ज़िंदगी भर इतना इनकरेज किया, इतनी हिम्मत दिलाई कि बहुत सी चीज़ें जो मुश्किल भी हुई मुझे मुश्किल न लगी, तो वो मेरा रोल मॉडल है। मैडम, बहैसियत खातून इस शोबे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? जब ख़वातीन बाहिम्मत होकर निकलती हैं तो मर्दों से बेहतर और ज़्यादा मजबूत होती हैं। कुछ फ़ैसले होते हैं जिनको करने में आपको ज़ाहिरी बात है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुश्किल समझ में आती है, जो मेरे लिए तो आसान हो गई कि 3 लड़कों को सिंगल हैंडेड पालना और तीनों को इस सोच से पालना कि कोई एक दूसरे से कम भी ना हो, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ या उनकी सक्सेस। तो जब मैं उसमें कामयाब रही तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि इससे बेहतर काम शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि आपके जो मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे दरवाज़े भी उनके लिए खुले हैं और हम उनको अपने पास कुछ ना कुछ जो कुछ आता है उनको सिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। A great university. When I came back from America, it was my first stint to come back to a local university and join it, and Greenwich was my obvious choice. It's made me what I am today, basically. The friends that I made, the things that I learned as far as my marketing and communication skills are concerned, and the fact that I'm proud to be part of the Greenwich alumni, and the fact that I'm back here supporting more students. I think that's more than what anybody else can say. Enjoy yourself, live it, learn it, and love it. You know, the education part, especially when we are going to college, is so important, because this is something that doesn't come back. As you grow older, as responsibilities increase, you don't have time for a lot of things, baby friends, relationships, meeting, just meeting people generally. And the time that you impart and the time that you have with each other is just so important. You only realize that once you're out of a college or a university. The fact that it's a success story, the fact that all of Greenwich students are somebody. You can never turn around and say that, oh, I graduated from Greenwich and I didn't get a job, or I graduated from Greenwich and I didn't get somewhere in life. You know, we just met somebody who was at LinkedIn. I've met somebody who, I've met so many people all over the world from Greenwich, whether it's Indus Motors, whether it's Igloo, whether it's myself, whether it's Toyota, whether it's like, you can go on and on and on. There are managers, GM Marriott in Dubai is Greenwich.
So many people, they're all over the place. And surprising for a university when we joined, it's a new university at that time. It wasn't something like IBA or LUMSO. It was a new university when we walked in. And we were not expecting this quality of education and also not expecting this quality of our future and what's defined for us. I flunked math 9 times. The Grid is an ideology put forth by Alicia Kanani. The Grid is a community center in its purest form that provides the general community a creative space to organize events. They facilitate 3 broad categories of artists, musicians, and writers. For musicians, they offer them a free stage to perform, sell tickets, and make money. For artists, they offer space for exhibition without charging any commission. For writers, they have a library and a typewriter. The vision aims to streamline a generation of creative minds who will become a change agent in the society. They vociferously campaign against the notion that art and music is an impractical profession in Pakistan by facilitating talent to earn money. They offer courses and services ranging from classical vocals to philosophy classes. The model of this community center relies on the crowdfunding with an assumption that the community will reciprocate if a venue is provided to them, which becomes a meeting point to discuss general problems in the society and possibly come up with solutions. Assalamu alaikum, this is Faisal Yusuf. I was from the first batch of Greenwich when we had the Southeastern University program. I've been associated with Greenwich for the last 25 years and I'm the proud alumni for Greenwich, and I want to be very active and proactive in this whole program that Greenwich has just started. Thank you very much. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you.
Farah Agha. I'm a proud alumni of Greenwich University. I'm the COO of Abbas Spinning and Weaving Mills and currently setting up a steel manufacturing plant. Greenwich has been instrumental in shaping not only our personalities, but providing us the life skills necessary for the professional success that some of us have had in our careers. Assalamu alaikum. My name is Fareed Zafar. I am the head of HR operations of Angro Corporation. And also I am a proud alumni of Greenwich University. So I'd like to thank Greenwich University for providing me a platform to enhance my skills, my education, and now I am in the corporate world and bringing a good name to the university. Thank you. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. Hi, my name is Fuad Mehdi and I'm the CEO at FNH Ventures. I'm a very proud alumnus of Greenwich University, and I would like to thank Greenwich for laying the foundations of my success and career. हुसूल जाह की खातिर नकज बिजर के लिए ये मकतबा है मिल्लत के हर बशर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें आप अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हैं। तो आइए और ज्वाइन करें CSR सोसाइटी, और जिन लोगों ने CSR को ज्वाइन किया है मैं उन तमाम मेंबरान को इस सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं। Hi, I am Haider Ali Asad and I am the Chief Operating Officer of FNH Ventures and a proud alumnus of Greenwich University. I would like to thank Greenwich University for giving me such wonderful memories. Hello everyone, welcome to Greenwich University Karachi campus. This is Afshan Farooq. I'm Vijay Hotwani, your today's host. And my name is Amit Prem and I'm very great to host you all since I have been to your campus. And to be very honest, your campus is beautiful and Moshid itself is an amazing place. Today we're going to show you Greenwich University's Karachi campus. Let's have a look inside at the Greenwich family. This is our very own lobby. And this lobby is one of the most favorite places of students over here. The class has just ended and you can see a lot of people waiting over here. They wait for their cars, they have gossip sessions over here, and they especially like this place when it's really hot outside. Let's have a look at rest of the campus. And that's our reception. And reception is one of the most important places over here since all your queries, all your questions are answered over here and they're very respondent to whatever you're asking. And this is our counseling room. Let's have a look inside in the counseling room. Over here you can see our counselors counseling a lot of students. They're helping you out with all your queries, whether it's about admissions, whether it's about anything in university, regarding your courses, regarding your attendance. They're always there to counsel you and help you out in the best possible way. Now we are standing outside computer lab. Let's have a look inside. So over here you can see a lot of students working in the computer lab. This is one of the most important places we have in Greenwich University Karachi campus. Now our computers are with high-tech technology and we have experts also working over here to help out the students with any concern which they have. Moreover, we have printing facility, we have free Wi-Fi in the entire campus and the Wi-Fi works really nice in the computer lab too. The Greenwich Library offers you a lot. From books, magazines, newspaper, it has a lot to offer to the students and this place is extremely optimized during the exams. Also, we have to add up a little more about this library. We have Wi-Fi facility over here as well and we have computers over there. So right when you're done with your books and stuff, you can also log in to your accounts. You can also refer to the internet for whatever information you need.
And I personally love the magazine collection in this library. And not only this, we have the e-library right over there, and you can see the students working very hard. Moving on to our auditorium right now. Assalamu alaikum, welcome to the Greenwich family. People, If you have any queries or concerns regarding to your courses, our communication center is here to help you out. And not only queries and concerns, but Communication Center ensures effective communication with each of the students they have in Greenwich University Karachi campus. And besides me, let me show you. Besides me, I have a student desk right over here. You can log into your account over here, and then you can know your status, check your courses, your timetable, and any kind of query which you have regarding your fee challan, regarding anything which you want to know is right over here inside with our experts. Now we are at the examination department. The students usually consider this as one of the scariest places. Scary but very important. All your exam queries, all the things regarding your attendance are solved in this department, and so this is very, very important. And like we mentioned before, that there is huge crowd at Communication Center when the semester begins. There is huge crowd at the Examination Center too, just when there are exams coming up on students' heads. So we'll give you a glance of the examination department as well. Now we're at Center of Creative Linkage Learning. Let's move on to what it is. Like you can see over here, the Center of Creative Linkage Learning has three basic functions. The first one is Language Academia. And under this Language Academia, we learn three different languages, which are French, Italian, and Chinese. The second basic function of CCL is Executive Development Program, and the third function which it performs is corporate communication. So we're standing outside the very interesting and very colorful place in Greenwich University, the state-of-the-art media lab. Let's have a look inside. So right over here you can see colorful walls, photographs, and this is basically our post-production studio, and we have high-tech technology over here as well, like we had in the computer lab, and it's an outstanding place for media students. Now this place is a practical vision of, what you see on TV, like the lights, camera, action you hear on TV. It is practically done over here, and you guys can have a very interesting look over here. This little miniature but beautiful window which you're seeing is of our radio lab. Let's have a look inside. This is our room with beautiful interior, and this is meant for radio recording and GTV. Let's have a look over here. It's kind of colorful over here. You can see a lot of pictures, a lot of quotations, and obviously very high-end technology. Hello everyone, and welcome to Greenwich Radio Station. You're listening to Afshan Farooq at Audio Diaries. And the GTV is operated by our Media Lab controllers. Besides me, I have the Greenwich University Research and Development Center, and with that we have the Office of Research, Innovation and Commercialization, ORIC. Let's have a look inside. We're going to have an inside view of Greenwich University Research and Development Center, and this is a very, very useful place for research students, especially those who are doing MPhil or PhD. Over here we have research journals and also ebooks, and most importantly we have a lot of research experts over here who help students out with their queries. So this was the Greenwich University Research and Development Center, a very useful part of our university. That's our indoor sports complex. Let's have a look inside. This is our very fascinating sports room, and over here students get a variety of games. From snooker, table tennis, foosball, Xbox, and a lot more things over here. Not only the sports area, but we also offer a gymnasium, and fitness freaks are often found over here. Heading to the cafeterias now. Here we have two cafeterias where you get delicious food and subsidized rates. This is our Cafe 1. Over here you have delicious food available in subsidizing rates, like I said before, and there's a lot more which Greenwich offers you. There's a variety of food which you can have over here, chill out with your friends, have selfies, and have a lot of fun after your class or before your class. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you.
the idea of TCF came up, Karachi was burning. We were at our lowest ebb. Let's ask this question amongst ourselves. We were 5-6 of us. That do we want to actually be part of the problem? So answer was no, we don't want to be part of the problem. But we asked ourselves a question that whatever we want to do, we want to actually get to the root of the problem. That once we settled on that we work on health, but what is the root of the health problems? That 40% of the health problems in Pakistan are hygiene related. So we said, okay, then we should work on hygiene. And the root of hygiene lies in education. So that is why we stumbled onto this cause of education. But we didn't know that that solution was TCF. हमारा जो ये इदारा है द सिटीजन्स फाउंडेशन, इसमें ये रोज़े अव्वल से हम सब के लिए एक मजबूत सुतून की तरह है. He has got a feeling for the less privilege of this country. I think that very few people in this country have a mindset which Allah has given Ehsan Salim. You know, somebody said, let's go out and big target. So how about 100 schools? And I said, no, maybe 500 schools. Then one of the founders, Maroom Rashid Abdullah, he said, nahi yaar, not less than 1,000 schools. So each one of us put up money ourselves to build 5 schools in a go. We said we will spend 1 year in trying to debug anything which is involved with the school, and if we think that we have perfected it, then we'll go out and ask other people to join. इनकी जो राय होती है उसमें समझदारी भी होती है, दानाई भी होती है, और वो दूर तक एक चीज़ को देखते हैं और फिर अपनी राय देते हैं और संजीदगी से देते हैं. One of the reasons why people don't send their girls to school is because of male teachers. So we also decided that all our teachers will be female. And to this date, all our teachers in the entire system are female. Mr. Ehsan Salim is a visionary and he's a exemplary human. I would like to say that he has the heart in the right place. Our fathers always made it a priority to ensure that all of us, like my siblings and I, understand that we need to be responsible actors in every way. We need to be responsible friends and family, responsible colleagues, responsible citizens, and overall responsible humans. The one thing that I feel he actually really inculcated in all of us is that the whole is greater than the sum of all its parts. Baba does not talk about his achievements, and we kind of feel overwhelmed, dwarfed by it, and also proud that he's managed to achieve so much, mashallah. And like Baba says, it's his ticket to heaven. एक्चुअली तो उनके साथ बहुत सारे एक जो है कि एक एल्डरली लेडी ने उनका हाथ पकड़ के एजुकेशन का थैंक यू करने के लिए उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ पर किस किया और बोला कि जी अब बेटा मुझे नज़र आने शुरू हुआ है जब से मैंने ये अडल्ट लिटरेसी में पढ़ाई करने शुरू की है. Then I would actually much respect a child who gets up and becomes a doctor or something and say, what does your father do? And he proudly says कि सर वो गधा गाड़ी चलाता है. Because उसकी गधा गाड़ी चलाने से ये डॉक्टर बन गया. तो they should have no shame, because every work, गधा गाड़ी चलाएं, sweeping the floor, this is work. And work cannot ever be menial. Work is work, and there is a lot of pride in doing your work. I want to honor and congratulate Ehsan first on getting this doctorate of humane degree, and also
feel that Greenwich University also should be congratulated for choosing and picking out the right people who have done service to the nation. We set up a very audacious target, but Alhamdulillah, that has been surpassed. In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have a photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. मिस शर्मीन लारी क्या करती थी कि अगर आप क्लास में लेट आए तो आपको गाना गाना है। भाई आवाज अच्छी नहीं है, गाना कैसे गाए बंदा? और फिर नजर आ रहा है कि सामने आपके पास 30 बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कैफेटेरिया में मजाक बनाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो हमने भी देखा, हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई, किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें, बस इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कॉफी विद अलमनाई। हर एपिसोड में आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में क्या कुछ किया, उनकी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, उस पर बात करते हैं। और आज जिस अलमनाई में हमें ज्वाइन किया है, आपको सुन के भी मज़ा आएगा और हम भी उनकी बातें सुन के बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हम वेलकम करेंगे आगा अहमद हुसैन साहब को और पूछेंगे, जानेंगे कि वो प्रोफेशनली अब क्या कर रहे हैं। आगा अहमद, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर दावत दी, हमें इज्जत दी, ग्रीनिच ने हमें इज्जत दी, एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आप प्रोफेशनली कर क्या रहे हैं? आगा अहमद हुसैन अब क्या कर रहे हैं? ग्रीनिच की बातें तो हम पूरे प्रोग्राम में ही करेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी अपने फैमिली बिजनेस से वाबस्ता हूँ। हम कराची में सदियों से लैंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। लैंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं। हाउसिंग स्कीम्स बनाकर उनकी प्लॉटिंग करके हम आगे उसको सेल आउट करते हैं। उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसकी केयर टेकिंग होती है, उससे वाबस्ता दीगर चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो आई एम एट द मोमेंट विद माई फैमिली in this family business, and alhamdulillah it is a great feeling to be working side by side with your father. क्या बात है। That feeling is something that I cherish every day. क्या बात है। Professionally मेरा ये काम अब चल रहा है। ठीक है, वेल सेड सर। सर, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का आपका टेन्योर कौन सा था, कब ज्वाइन किया, कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हुए? ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से मेरा रिश्ता कायम हुआ 2007 में। मैं ए लेवल्स करके निकला और सीधा ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आया। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आने की वजह बड़ी मेरे लिए सिंपल थी। हमारे कुछ जानने वाले यहाँ पर मौजूद थे जिनके थ्रू मैंने रिसर्च की, तो पता चला कि यहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर अच्छा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी जाती है।
it was actually a no-brainer for me to enroll myself in Greenwich. 2007 में मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एडमिशन लिया एंड 2010 में मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ. पढ़ाई भी की, एंजॉय भी किया, बहुत सीखा. एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, you learn the most when you put your theory into practice. This was given to us by Greenwich University at a very early age. Of course, आपके कुछ foundation courses होते हैं, जिनको आप 001 कहते हैं या 101 कहते हैं. ये foundation courses हैं जिस पे आप अपनी theory को समझते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं. But as soon as you enter the second level of your courses, you start putting all of that in practice and it is the best feeling ever. आपको पता होता है कि अभी अगर आप जो पढ़ कर आए हो आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, अब गिरोगे. You are bound to fail. It's good to fail. And you know that you have a teacher right next to you saying, okay, now you know there is one way that how you're not supposed to do it. So now you'll do it the right way. So they've prepared you for the real life. And once you enter into the industries, आपको सारी अपनी फ्लैशबैक्स आती हैं कि क्या क्या गलतियां आपने की थी और अब आपने क्या क्या नहीं करना और आप सही डायरेक्शन पे जा रहे होते हो. 2010 में मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया और मैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आ गया. I started working. I was associated with the media industry for a short time. And then predominantly, I was associated for a decade with the aviation industry of Pakistan. I served as the head of sales for Oman Air for 6 years. Then I served as the head of sales for Turkish Airlines for 4 years until my recent moving to my family business. But in सब के बीच में 2015 में I enrolled myself for my master's program at Greenwich University. लग रहा था ऐसा कि पढ़ाई और होनी चाहिए. You have to keep yourself in that momentum of learning continuously. और शायद अगर मैं इतना अच्छा पढ़ाई में पहले नहीं था, प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद वो स्पिरिट और थोड़ी तेज़ हो गई. तो 2015 से 17 मैंने अपना मास्टर्स किया और ग्रेजुएशन बड़े अच्छे हाई परसेंटेज से GPA से मैंने अचीव की. Alhamdulillah, I'm still thankful to myself, more thankful to my wife for pushing me to do my MBA. वरना आप नहीं करते, right? वरना शायद मैं नहीं करता, क्योंकि you always need that motivation behind you. No doubt, sir. And this can come from your parents, from your friends, from your colleagues, from your teachers. मेरी जो ड्राइव थी वो मेरी वाइफ की तरफ से आई और उसकी भी एक वजह थी कि हमने एक पैक्ट किया था कि I will do my masters, as soon as I end it you will do your masters, and both of us did it, you know. And alhamdulillah, एक ख्वाब होता है, ख्वाब पूरा होता है, सबको अच्छा लगता है. बहुत खूबसूरत बात. आगे बढ़ते हैं जी. अब ये बताएं कि MBA भी आपका हो गया, कोई ऐसा टीचर जो आपको स्टिल अच्छा लगता हो कि यहाँ इन्होंने सिखाया, इन्होंने पढ़ाया और मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है मैंने अपना उसमें उनकी वजह से थोड़ा बहुत बेहतर किया, तो कोई याद है आपको ऐसा प्रोफेसर? और क्यों? मुझे अपने सारे प्रोफेसर याद हैं और हर प्रोफेसर ने मुझे सिखाया. वो भले मेरा रिमीडियल का कोर्स हो या वो मेरा सबसे फाइनल कोर्स हो. Every teacher in this university calls you out, understands you, knows you, gets to know you, and then deals with you in a manner where we are ought to learn. टीचर्स के मैं नाम लेने जाऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू I would thank all my professors, all my teachers, all the administration. It is because of these people that I am where I am. And the way I am here sitting in front of you, trust me, there are thousands of people
जो मेरे साथ भी रह चुके हैं, मुझसे पहले के बैचेस में भी रह चुके हैं, who feel equally grateful to all the teachers. क्या बात है। अच्छा सर, which professor you didn't like? मतलब ऐसा कोई प्रोफेसर हो जो आप जिससे खौफ खाते हो, यार इसकी क्लास नहीं लेनी है, इससे पढ़ना नहीं है, इससे भागना है, जिसने सख्ती की हो सही तरीके से? उनकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनके लिए हमेशा दुआएं देता हूँ। दुरानी साहब you are talking about? I am talking about a professor who used to teach us calculus. His name was Professor Barkat Ali. And ये मैं आपको अपने बैचलर्स की बात बता रहा हूँ। गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना था, मुझे कैलकुलस नहीं पढ़ना था, और उनको पढ़ाना था। और उनका अंदाज पढ़ाने का, वो उनको पता था क्लास में कि ये आगा बैठा हुआ है, इसको तो पढ़ना नहीं है, तो मैं इसको उसी अंदाज से मैं डील करता हूँ। अब एग्जाम में बैठने के लिए आपको 2 से ज़्यादा एब्सेंस की इजाज़त नहीं थी, तो बैठना भी है। प्रोफेसर की इज्जत करते हैं तो उनको तंग भी नहीं करना है, जो वो कह रहे हैं उसको आपने बर्दाश्त भी करना है। पढ़ के फिर भी नहीं दिया। ये तो पहला सेमेस्टर उनके साथ जब किया तो ये इस तरह का मेरा रवैया था। फेल हो गए, कोर्स रिपीट किया, फिर से वही प्रोफेसर, ले भाई खुद फंस गए, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने कैलकुलस 3 अटेम्प्ट्स में पास किए और तीनों दफा प्रोफेसर बरकत थे। लास्ट अटेम्प्ट में क्या आपका ग्रेड रहा, ये बता दें। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई गॉट अ सी। और जो मुझे याद है उस कोर्स में एग्जाम में आया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने इतना उसके लिए पढ़ा था। प्रेशर दिमाग में बन गया होगा, एक कोर्स को 3 दफा पढ़ना। मुझे खुद वो हो रहा है कि आप मतलब बताओ स्टूडेंट कैसे करेंगे। दूसरी दफा समझ में आता है, लेकिन तीसरी दफा जो आपके दिमाग में ये गया होगा वो आपको सारी जिंदगी अब याद रहेगा। मुझे याद है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आप वही चीज आंसर भी कर दोगे। अच्छा आगा साहब, एक्टिविटी बताएं, आपकी किस तरह की एक्टिविटी कैंपस में रही, कहाँ आप इन्वॉल्व थे? इन्वॉल्व मीन इन सोसाइटीज जो एकेडमिक्स की हमारी होती हैं यूनिवर्सिटी की, किस तरह का आपका ग्रुप था, किस तरह का बैच था, क्या एक्टिविटीज आप करते थे? हमारा यूनिवर्सिटी में कल्चर है, वो कल्चर बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली ओरिएंटेड है। हम जिस टाइम मैं बैचलर्स में था, यकीन माने एवरी स्टूडेंट न्यू द अदर स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट न्यू एवरी टीचर एंड एवरी स्टाफ मेंबर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। हम जो भी करते थे इस यूनिवर्सिटी में, हम साथ मिल के करते थे। अगर वो स्पोर्ट्स है तो हमारा स्पोर्ट्स में एक सर्कल बना हुआ है और वो सर्कल को सब एक्सेप्ट करते हैं। एकेडमिक्स है, हम सब मिलके करते थे। मेरा पर्सनल एसोसिएशन कभी किसी सोसाइटी के साथ नहीं रहा, मगर आई ट्राई टू बी एज प्रोमिनेंट इन दिस यूनिवर्सिटी एज पॉसिबल। और उस प्रोमिनेंस की वजह ये नहीं थी कि मैं कुछ सोसाइटी से लिंक्ड हूँ, उस प्रोमिनेंस की वजह ये थी कि ये यूनिवर्सिटी आपको वो इज्जत देती है, तो आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से ग्रूम होती है। बिल्कुल सही बात है। ये मैं अकेला नहीं कहूँगा, आप जिससे बात करेंगे वो आपको यही जवाब देगा। बिल्कुल सही बात है। सर क्लास बंक की कभी ये बताएं कि अभी दिल चाहा कि क्लास नहीं लेनी और निकल गए बाहर? देखिए जी, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने क्लास बंक नहीं की हो। अच्छा हमें वाकया बता दें, आपने कैसे की, कैसे प्लान किया, या कभी पकड़े गए क्लास बंक करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग गया, टीचर को पता लग गया? देखें, हमारी एक टीचर थी और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं अभी भी उनसे इन टच हूँ, मिस शर्मीन इम्तियाज़ लारी। मिस शर्मीन लारी क्या करती थी कि अगर आप क्लास में लेट आए तो आपको गाना गाना है। भाई आवाज़ अच्छी नहीं है, गाना कैसे गाए बंदा? और फिर नजर आ रहा है कि सामने आपके पास 30 बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कैफेटेरिया में मजाक बनाएगा, तो अगर आप लेट आ रहे हो तो आओ ही नहीं। तो हम आते थे, कैफेटेरिया में जाके बैठ जाते थे। हमारे यहाँ होती है क्लास के बीच में एक ब्रेक,
उस टाइम पे प्रोफेसर्स भी आते हैं कैफेटेरिया की तरफ, उन्होंने देख लिया कि बैठे हुए यहाँ पे तो चाय और क्लास नहीं ले रहा, और क्लास नहीं ले रहा। अरे भाई अब तुम गाना गाओगे कैफेटेरिया में। अच्छा, मतलब ये क्लास तक महदूद नहीं रहा, नहीं, पूरा कैसे कैंपस नहीं? देखेगा। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि ये यहाँ का कल्चर अच्छा था। क्या बात है, बड़ा मजा आया सुन तो के। बंक की है, मगर एक पॉइंट आता है कि आप का दिल नहीं चाहता बंक करने का, आपको क्लास में रहने का दिल चाहता है। तो इससे ज्यादा बेहतर नहीं था कि वो गाना आप 30 लोगों में गा लेते तो वो ज्यादा सही रहता। हाँ, तो उसके बाद गया क्या बात है, क्या बात है आगा साहब। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो हमने भी देखा, हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई, किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें बस, इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे या? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से गलत कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं है, मेरी सबसे अच्छी बातचीत है। आई एम इन टच विद ऑल द फ्रेंड्स दैट आई मेड ड्यूरिंग माई टाइम इन द यूनिवर्सिटी। अभी भी मेरे साथ उनसे बातचीत। क्या बात है। तो मेरा कभी कोई पर्सनल रिलेशन या उसको आप कहते हैं लव एंगल से अगर आप देखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्योंकि आपको फिर ये चीज ना होने से आप फिर आपको पता है आपका ट्रैक क्या है, आपका मिशन क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, आपने फिर घर जाना है ना, तो मैं उस पर फिर राग़िब रहा। चलिए, अच्छा हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, हमारा एक राउंड होता है, इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम जो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का पुराना स्टाफ है उनका एक नाम हम आपके सामने रखेंगे, आपके दिमाग में जो भी उनके बारे में आए आपने 1 वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है। और अगर मैं 1 वर्ड में नहीं कर पाया, आप सेंटेंस ले लें। थैंक यू सो मच। ठीक है, इजाज़त है सर। राशिद इकबाल। राशिद के पास हम जाते हैं और राशिद कहते हैं, राशिद ये वाला कोर्स चाहिए मुझे, राशिद कहता है डन। और फिर मिलता था। अच्छा, राशिद इज योर मैन टू गो टू गेट एनीथिंग डन। जबरदस्त। अच्छा सर, राशिद के बारे में मुख्तलिफ अलमनाइज मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाता है। सर, रब नवाज के बारे में क्या कहेंगे? रब नवाज इज द स्वीटेस्ट पर्सन दैट यू कैन मीट इन दिस यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली। जेम। सर, कामरान भाई, again, he is the most helpful personality you will find in this university. Anything that you are facing and you want to discuss with someone to get out of that problem, you can go to Kamran bhai. अच्छा, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कामरान साहब के साथ, वो सब किसी को नो कहते ही नहीं कहते। उनके लिए मतलब आधी रात को भी आप फोन करेंगे, कामरान भाई ये काम है, हाँ हो जाएगा, डन है, 100% सही है। और मतलब because he is true to himself. एंड वो हमारे ऊपर भी यही रोशनी डालते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सर, जमील अहमद के बारे में आप क्या कहेंगे? जमील साहब एग्जामिनेशंस के थे, उस टाइम बड़ा डर लगता था। अभी भी एग्जामिनेशंस का हिस्सा है? हाँ, मतलब अब मेरे एग्जाम नहीं हो रहे ना, अब तो बाहर निकल गया। अच्छा, तो उस टाइम एग्जामिनेशंस पे थे, उनका दफ्तर ऊपर होता था। ठीक। एग्जामिनेशन में कंपल्सरी कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो, तो उस टाइम जमील भाई हेल्प कर दे। तो जमील भाई एक लेटर दे देते कि लिख दो इसको, लेना हम अप्रूव कराने की बात करते हैं। सही। सर, मुनीर के बारे में? मुनीर साहब इज अ फाउंडेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू द स्टूडेंट्स। ही हैज बीन हियर सिंस डे 1. Amazing personality, always helpful, always here to help you out.